Coming to economics, right? I am focusing on 2022. जोटा ହେଇଥିଲା already तारा prelim रे. So let's segregate the questions, right? So first of all, there was a question related to 2000 currency notes. So I can say this is from pillar 1, evolution of money, जो थे कि 2000 rupees रो currency थिला जोटा news रे थिला तार ताको से मैंने कहतले कि बैंक रे डिपॉजिट कर दियो ता बदल रे तमे पैसा नहीं आसो. We will try to understand from that perspective. So basically मन रखो 2000 currency note perspective and ता related जहाँ current affair थिला. This is I can say from current affair. Okay. Then the next question was related to Niti Aayog and it is related to multi-dimensional poverty index. So I will say pillar 6 and this is multi-dimensional poverty index. Multi-dimensional poverty index. Okay, so this we didn't talk about, so we will continue. I will try to cover all the pillar 6 because what I am seeing is by segregating these questions, I am finding pillar 6 is much more important from OPSC perspective because they are not asking much conceptual questions, right? They are morely asking related to do you know poverty, because Odisha by default it is, if you see, right, somewhat there are a lot of poverties, right? So because of that they are focusing on these key areas, that is pillar 6. Then if you will come to here, then this will be RBI. So I will say this will be morely related to RBI ର act. So we need to know RBI ର different act रे कौन कौन provision थिला. And if you see, this is something related to ଆମର जो repo rate decide वगैरह हुए, inflation control, right? So this is related to inflation control. Then there was Manrega. So I will say again pillar 6, sustainable development goal we will talk about. Then this is related to poverty line consumption, again pillar 6. Okay, related to poverty. Then this one I can say forex reserve, so balance of payment, pillar 3. Okay, so this was very simple question. Then GST I can say pillar 2, this is related to budget. Okay, then PLI I can say infrastructure, right? Production linked incentives, so this is infrastructure. I will consider this as in pillar 4 or pillar 5. Mostly pillar 4 only because we want to do give PLI. So to export more, right? Production linked incentives. So make in India रे जहाँ तमे आनिलो कि तमे जिनस product तैयारी करो, then ताको बाहर को distribute करो ताकि हमारा export बढ़ो. So it is morely related to pillar 4 जो थे हमें manufacturing sector. Means secondary process, right? Primary, secondary, tertiary. So secondary. This is morely related to manufacturing. So then this question is repeated, is it? Okay, this is repeated, so I am cancelling it. Then NABARD is interested. Okay, NABARD. So this is pillar 1, banking. Okay, so banking रो classification मते टिके करेबार अछि. And see जदि तमे देखियो से NPA related issue एथिरे आसेनी because that is more related to mains. NPA हे गला, bad bank हे गला, right? सेगुडा related to mains. But here what we are trying to say is NABARD रो function कोन, SHG group गोडा को के पैसा दोची, right? Housing loan ପାଇଁ के पैसा दोची, से perspective रो economy रो prelim रे आछि. Then there is related to, again this is pillar 6, right? जो थिरे हमें कहू कि female infant mortality, female foeticide, total fertility rate, mortality rate सेगुडा already हमें decide करथले, right? So से perspective हम उठी देखा रही, that is again pillar 6. Now this is again NABARD is the same question. NABARD providing financial lending, yeah, same question. I will remove it. Okay, so जदि तमे एतिकी देखिबो ना, एतिकी भितर तो pillar 6 जदि मु कहि परता pillar 1 मते तमे को pillar 1 रो केतरा क्वेश्चन, गोटे pillar 6 रो गोटे. Then RBI Act I can say pillar 1 or pillar 1. So pillar 1 ରୁ ଦିଟା, pillar 6 ରୁ ଦିଟା, pillar 6 ରୁ ତିନିଟା, pillar 3 ରୁ ଗୋଟେ, pillar 2 ର ଗୋଟେ, pillar 4 ରୁ ଗୋଟେ, pillar 1 ରୁ ତିନିଟା, pillar 6 ରୁ ତିନିଟା. Now you understood that pillar 1 ଆଉ pillar 3 ରୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି pillar 1 that is focusing more on money and banking. से शेयर मार्केट रो तो आसी ही नहीं क्वेश्चन, am I right? Money and banking is more important, तीनटा क्वेश्चन. जदि मु कहबी कि pillar 6 more related to poverty, right? हंगर फंगर तो बेसी नहीं, poverty रो बेसी अछि. Poverty multi-dimensional index, तो एथिरु लगभग तीनटा क्वेश्चन. देन जदि मु कहबी pillar 2 budget related, सेथिरु taxation ऊपर GST ऊपर क्वेश्चन आस्तिला गोटे क्वेश्चन.
जदि मु कहबी पिलर 3 दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट सेथिरे 4x रिजर्व विषय गोटे क्वेश्चन आसला सो 4x ऊपर गोटे क्वेश्चन पिलर 4 रो मैन्युफैक्चरिंग रो गोटे क्वेश्चन राइट एंड पिलर 5 पिलर 5 तो किसी देखी नहीं मोस्टली पिलर 5 मैन्युफैक्चरिंग आ गोटे पिलर 5 रे गोटे आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग ओके पिलर 5 रो गोटे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड गोटे क्वेश्चन आसला तो पिलर 5 जोटा कि तमरो कहउछ कि बहुत सारा स्कीम आस जाय राइट इंफ्रास्ट्रक्चर सो यू कैन कंसीडर इंफ्रास्ट्रक्चर रो काहा को जदी किसी गोटे लिंक कला तो भाबिनो इंफ्रास्ट्रक्चर रो गोटे क्वेश्चन बट आवर मेजर पोर्शन इज गोइंग टू कवर फ्रॉम पिलर 1 एंड पिलर 6 एनी डाउट इन दिस 2022 prelim. Okay, so those who have done from Mrinal sir note, they can actually try to grasp it because I am talking from thriller perspective. Those who did from other books, they can just try to link it like in that book how it is linked, right? So सेटा टिके तमे देखि नबो otherwise मृणाल सर को जो माने तो करथिबे से माने ई पर्सपेक्टिव रे गले से माने बुझी परिबे कि कोडा पिलर 1 कोडा पिलर 2 anyway now coming to next 2021 prelim pillar 1 this is share market and bond market से भी कथा पड़ेगा राइट तो गोटे क्वेश्चन देन वन नेशन वन रेशन कार्ड सो आई विल से पिलर 5 जो थरे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कथा हमें एटा नहीं परिबो या फिर पिलर 6 रे तमे पॉवर्टी रिलेटेड नहीं परिबो राइट कि जो थरे हमें कहले हंगर रिलेटेड राइट कि हंगर रिलेटेड हमें कवर कर परिबा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कि मेरा घर मेरा गांव तो से पर्सपेक्टिव रे एटा को हमें ऑलरेडी पढ़ी थिले वन नेशन वन रेशन कार्ड सो आई आइदर यू कैन टेक आइदर पिलर 5 और पिलर 6. Next is global startup ecosystem. This will be morely related to infrastructure. So pillar 5. Okay, pillar 5. Then national upskilling, pillar 6. You remember pillar 6 रे हमें गोटे कहउतले hunger, correct? Then health, then education, right? Under education there is a skill. हाँ कि नहीं? So I will consider this is pillar 6 and it is related to current affair initiative schemes, right? So this is related to schemes. Then e-vidya again education pillar 6 education schemes related. Then union okay this is tax so pillar 2 so जो थरे budget आस्तला सेथरे budget रो taxations right so this is taxation pillar 2 then same corporation tax okay corporation tax I'm cancelling it fine then okay this is pillar 6 NFHS law survey करेक्ट नो तो से हम ऑलरेडी देखिले कि सेक्स रेशियो केते कोन अछि सेटा पिलर 6 देन इफ यू टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगेन एसडीजी पिलर 6 regular census pillar 6 you just see how much important pillar 6 is from the perspective of OPSC in prelims but in case of UPSC right pillar 6 रो hardly दी तीनटा क्वेश्चन तुमको मिलबो because UPSC जीवो बहुत conceptual रे राइट कि तुमको दरकार शेयर मार्केट रो अधिक क्वेश्चन आस जीवो या फिर तुमरो क्वेश्चन आस जीवो बैंकिंग पर्सपेक्टिव रो या फिर तुमरो क्वेश्चन आस जीवो रिलेटेड टू forex राइट forex in the sense balance of payment रो but एठी तो तुम क्वेश्चन वाटा देखियो मोस्टली पिलर 6 again see sustainable development goal I will say SDG and it is a straightforward questions right SDG যদি তোমার 17টা মনে আছে দেন ডাইরেক্টলি তুমি কইবো কি ওকে 10 দিয়েছি দেন রিডিউস ইনইকুয়ালিটিজ ডাইরেক্ট আনসার রাইট সো SDG I will say pillar 6 concept of sustainable development goal SDG pillar 6 okay wholesale price index pillar 4 GDP वाला concept right somewhere GDP GNP GNP रो CPI index then wholesale price index okay तार base year कौन straightforward question GST pillar 2 okay this is pillar 1 monetary policy जो थे M1 M2 money supply M1 M2 M3 M4 post office related this is pillar 1 right okay then Indian plan 5-year plan right okay I will consider this as a 5-year plan 4 pillar 4 pillar 4 I can say pillar 5 also anything is fine pillar 4 5 then economic gender gap pillar 6 then poverty multidimensional poverty index pillar 6 which India plan accepted as strategy of inclusive growth for the first time again pillar 4 or pillar 5 this is 5-year plan blue colored bal Aadhaar card pillar 6 sustainable development goal again pillar 6
This is now 2020. Now 2021 ର analysis करदवा केतेटा क्वेश्चन पिलर 6 रो आसी. So first of all पिलर 6 रो गोटे, पिलर 4 रो गोटे, 6 रो दीटा, 6 रो तीनटा, 4 रो दीटा, 1 रो गोटे, 2 रो गोटे, 4 रो तीनटा, 6 रो चारटा, 6 रो 7 5टा, 6 रो 6टा, 6 रो 7टा, 6 रो 8टा, 2 रो दीटा, 6 रो 9टा, 6 रो 10टा, 5 रो दीटा. Approximately pillar 6 I can say 10 questions. Now just imagine out of 14 or 16 questions there are pillar 6 वाला question 10 टा question. Pillar 6 रा I think 4टा कि 5टा हैंड आउट अछि. That is more than sufficient. सेइथिरु जदि तमे भल से ताको 2-3 थर एपट एपट कर दबो ना देन मोस्टली मते लागो सेइथिरु ही क्वेश्चन प्राय तो तमे कवर कर नबो. Is that clear? Pillar 6 रा हैंड आउट health, hunger, education, then poverty. Okay. तो आउ रहिला पिलर 1 रो लगभग 2टा क्वेश्चन, पिलर 2 रो लगभग 2टा क्वेश्चन एंड पिलर 4 रो लगभग 3-4टा क्वेश्चन. And I think this is sufficient, right? Let's see more. Then 2021 गला ना 2020. Okay, 2020 पिलर 6 गोटे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगेन पिलर 6 रो 2टा, कमर्शियल बैंक दिस इज बैंकिंग पर्सपेक्टिव पिलर 1, पिलर 6 रो 2टा, 6 रो 2टा, 1 रो गोटे. SHG financing support I will say consider this was in pillar 1 banking perspective. So you remember banking रो भी question आछे, banking रो 2टा, pillar 6 रो 2टा. Then this is related to financial inclusion I will say pillar 1 D. So pillar 1 रो 3टा, bank आउ 6 रो 2टा. शिशु किशोर तरुण this is again pillar 6 scheme. जेते सब स्कीम अछि सब पिलर 6 राइट, मोस्टली पिलर 6 एंड पिलर 5. सो पिलर 6 रो 3टा, पिलर 1 रो 3टा. देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगेन पिलर 6 रो 4टा, मिनिस्ट्री ऑफ बजट पिलर 2. सो नाउ वी हैव 4 3 1 राइट. तो ये होची 6, ये होची 1, ये होची 2. CPI I will mention CPI is pillar 4. So this was 4 3 1 4 3 1 1 4 3 1 1. Now GDP pillar 4. So I will mention this is 2. So this is pillar 4. GDP टा को हम उठी के देखिबा. Then Robin Hood effect. So income and consumption basically एगुडा तमे नै परिबो pillar 3 रे, not pillar 3 pillar 4 GDP पर ही कवर हे जो. So pillar 4 रो आ गोटे. Then आउ कोन रहला monetary policy रो आ गोटे. So monetary policy रो आ गोटे 4 4 1 3. So this is 6, this is 1, this is 2, this is 4. Then आउ कोन रहला this is pillar 1, this is pillar 1 correct. So insurance wala right. So this is pillar 1 again I will say pillar 1 5 questions. What next? Yeah, I think that's it. Oh, we'll focus now here, right? So now I got a overall idea that pillar 6 ro 4टा, pillar 6 1 ro 5टा, right? That means I will focus more on pillar 1, then I will focus more on pillar 2 taxation related. This is monetary policy, banking, share market सेते important नहीं, but current trend अनुसार सेते की important share market रा सेते की मुता discussion करे ही नहीं, right? UPSC रा PYQ हिसाब रे कि share market टा important, तो UPSC रा PYQ रो share market टा करबा. Then pillar 1 important, pillar 2 important, most important is pillar 6. Any doubt in this? Most important is pillar 6 and we have 4 to 5 handout of pillar 6 that you have to go through thoroughly because they are covering schemes as well. Okay, fine. Any doubt? Any doubt? Any doubt? Okay, now coming to pillar 1, right? So pillar 1 रे तमे जदी जति क्वेश्चन देखियो मोस्ट प्रोबब्ली से क्वेश्चन गुडा को पर्सपेक्टिव हितला गोटे छिला मनी सप्लाई रिलेटेड आ गोटे छिला बैंकिंग पर्सपेक्टिव. नो मनी सप्लाई एंड बैंकिंग आउ जदी किछि एक्स्ट्रा गोटे दिटा क्वेश्चन बाउतला देन गोटे थिला आईआरडीआई वगैरह राइट कि से कहा को ऑडिट करूची whether that is a statutory body or it is a like executive body or constitutional body से पर्सपेक्टिव जोटा कि इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर रो
आउ जदि शेयर मार्केट बॉन्ड मार्केट से गोटे गिल्टेड सिक्यूरिटी बोधे मे बी आपको नेक्स्ट लाइक 2018 रो से गोटे क्वेश्चन दिला रिलेटेड टू सिक्यूरिटी हाँ लाइक गिव ए सेकंड नेशनल इनकम good money hoarded mixed economy somewhere I saw that question somewhere security perspective yeah gilded securities so basically se through share market or securities bond market ro basic question asi nahi OPSC perspective re but if you see these are the important area money supply banking and IRDI and OMAS ro bhi question रहला related to ATM ki white label ATM bank label ATM right brown label ATM so say perspective so at least what I will try to do is to cover this money supply wala concept right कि पिलर वन रो जहाँ जहाँ अच्छी I am coming to OPSC prelim 2022 now you tell me this is related to 2000 currency that will try to cover 2000 currency जोटा नो थिला न्यूज रे then we will try to talk about pillar 1 RBI रो act and what else okay fine maybe most probably we understood that it is all related to pillar 1 and pillar 6 these are the important areas at least pillar 6 if there are 5 questions I should able to do 3 at least from pillar 1 if there are 2 or 3 questions I should able to do 2 or out of 3 I should able to do 2 or at least one question तो मु करिवि ही करिवि एतिକି ତ एटलीस्ट जणा ही पड़ुता दरकार कि भाई क्वेश्चन देखले मते जणा पड़ुतो सी दैट्स व्हाट प्रिपरेशन मैटर्स राइट कि क्वेश्चन देखले तमे बुझी परतो कि भाई एटा मु पढिची ना पढिनी जणा पड़ला कि क्वेश्चन ही पूरा लागुची कि मु किछि पढिनी हुए ना एग्जाम सेंटर को सेमती गले तो तुमको जणा सब तुमको करंट अफेयर भले ही लागिवो कि ताको जे तमे लिंक करबा देन तुमको मन पड़े अच्छा आगु मु भाबिबी कोठू करेक्ट नो फाइन एनी डाउट एनीवन हैव एनी डाउट So the first thing that I'm going to discuss today is related to what is money, what is fiat money, what is legal tender. We never know. UPSC ର क्वेश्चन ଅଛି ତ କାଲି ମେ ବି ଆସି ଯାଇପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ at least ଏତିକି ତ ରେଡି ରଖିଥିବା କି what is money, money ର different functions, what is fiat money and what is legal tender. Anyone who knows, please tell me. যদি কেହି জাଣିଛ what is money so now I started right I started revising so from now on we saw what are the different categories ki where the questions are morely like to come right I already देखिले कि mostly it is related to pillar 6 and mostly it is related to pillar 1 but if you see UPSC ର strategy right this is UPSC okay UPSC ର ଯଦି question ତମେ ଦେଖିବ maximum question ତମକୁ pillar 1 ରୁ ହିଁ ମିଳିବ 7 7 9 7 6 8 7 ଟା question but pillar 6 को ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ hardly they are asking any questions in UPSC. Like in 3 years, 2020, 2021, 2022 prelims, hardly questions, zero questions, and 2023 data question. But in case of OPSC, if you will try to segregate, you will see every time it will be approximately in an average of 5 to 6 questions. Which one? Pillar 6. So it is much more important in case of OPSC rather than in case of UPSC. But UPSC रे pillar 1 बहुत important सेथिरु से माने शेयर मार्केट रू क्वेश्चन पचारंती सेथिरु से माने बैंकिंग रू क्वेश्चन पचार दे परिबे सेथिरु से माने किछि स्कीम पचारबे जोडा इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर रे कवर हेजबो बिकॉज़ इंश्योरेंस पेंशन इज आल्सो कनेक्टेड विथ पिलर 6 कि जोथि हम कहूचे कि तार हेल्थ इंश्योरेंस दरकार तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से माने इंश्योरेंस कवर हेतिबा दरकार तो हे इंश्योरेंस को तमे कोडी कवर करबो अगेन इंश्योरेंस एंड पेंशन स्कीम रे जनक पाखरे पॉवर्टी अछि तो से पॉवर्टी को इरेडिकेट करिया पई हेले पर जो ई मनधन स्कीम वगैरह तमे कथा कहउतो जोथि से माने को मास 3000 टका लाखे मिलिबो 60 वर्ष पर को मानको जो माने अनऑर्गेनाइज सेक्टर रे काम करूचंदी राइट ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर्मल इनफॉर्मल लेबर एगुडा ऑलरेडी आमे पिलर 4 रे ऑलरेडी कथा हेतले राइट इन्फ्लेशन पर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रे कथा हेतले तो जदि तमे देखो सेगुडा सेते इंपोर्टेंट नथिला बट स्टिल वी नो in future if there will be question we can tackle it because those are very important from the UPSC perspective and we never know ki what kind of question will come but definitely I will ensure ki pillar 6 ରୁ ତ question ଆସିବ because last 3 ବର୍ଷର ଆମେ strategy ଦେଖିଲେ कि last 3 ବର୍ଷରେ pillar 6 ରୁ ଅଧିକ question ଆସୁଛି and pillar 1 ରୁ କିଛି question ଆସୁଛି ଯୋଉଟା कि monetary policy ଉପରେ anyway now coming to our revision right so we'll try to see economy ର pillar 1 ତ pillar 1 ରେ ଅଛି କଣ କଣ first ତ କଥା ହଉଛି money ର evolution କେମିତି ହେଲା right how money came into picture second we will understand what is this banking ର different classifications okay and ମୁଁ मेंस पर्सपेक्टिव टोटली ही जीपीनी जो गुडा एनपीए वगैरह बैड बैंक वगैरह से गुडा मु करिवारी नहीं बिकॉज़ ता ऊपर हमें गोटे भी क्वेश्चन देखिने
करेक्ट नो लास्ट 3 वर्ष देन बैंकिंग पर आमे देखिबा सेक्टर्स जोड़ा आमे कहूचे कि सॉरी शेयर मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट the last one will be insurance and pension. Now if you see out of these four the most weightage is money and the most second weightage will be banking. Okay, these two are the most weightage and ethiru hardly some question pacharchandi but mostly it is related to money and banking. Any doubt in this analysis? Okay, sure. Now our first concept, we have to understand what is money, we have to understand what is fiat money, and we have to understand what is legal tender. So this table will help you. Please try to take a screenshot of this so that you can revise whenever you want. Okay, तो जेतले कहला कि मनी, सो मनी रा दीटा कंडीशन अछि, मनी रा दीटा कंडीशन अछि. So what are the two conditions? So if you will see money, it can measure the value and it can be a medium of exchange. That are the two conditions where we call it as a money, right? So barter system, we don't require barter system. Okay, necessity of money. Give me a second. So two primary function of the money. Yes, primary function of the money. It can measure the value. Okay, and it will be a behaving as a medium of exchange. Means money द्वारा तमे कौनसी भी वस्तुर तमे कौन कर परिबो तार वैल्यू तमे मेजर कर परिबो. हां कि नहीं? ओके, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जदि तमे कहूछ कि मु गोटे एक्सचेंज करिया चाहूची कि आगुरु जेतले मनी नथिला सेतले बाटा सिस्टम कोन होतला कि भाई तम पाखरे आलू अछि मो पाखरे टमाटो अछि मते आलू दरकार तमको टमाटो दरकार जदि तमे आलू मते केजिटे दे दियो मु तमको टमाटो दे देबी. करेक्ट नो, दिस इज व्हाट बाटा सिस्टम यूज्ड टू वर्क. बट इन केस ऑफ मनी you give me aloo, right, you give me potato and I will give you, let's suppose 50 rupees, then with that 50 rupees you try to purchase something else. That means it is a medium of exchange. टमाटो ताको तमे सेल करो किछि पैसा आनो, पैसा आनी कि तमे व्हीट किनो या फिर तमे मैंगो किनो. बट जेतले मनी नथिला ए पर्सनटा ही नथिला, टमाटो को मैंगो सहित एक्सचेंज करो. दैट वाज द सिचुएशन ऑफ बार्टर. इज दैट क्लियर? बट बार्टर सिस्टम इश्यू कोन आसीबो भाई तमरो टमाटो दरकार, तुमको खोजिया को पड़िबो को लोक को तमरो मैंगो दरकार, तुम पाखरे टमाटो अछि तुमको खोजिया को पड़िबो, सर्च कॉस्ट विल बी मोर. जो दिन तुमको खोजिया पड़िबो कि भाई को लोक अछि जे मते आंबो देई कि मोटू टमाटो मागो, मते पूरा गांटा जाकर खोजिया पड़े भाई तुम पाखरे आंबो अछि. सो हायर सर्चिंग कॉस्ट. वेरी नाइस. सो बिकॉज़ ऑफ द सर्चिंग कॉस्ट हाउ मनी इज इरेडिकेटिंग इट, बिकॉज़ मनी इज बिहेविंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आ तुमको खोजिबा नै भाई ठीक अछि टमाटो तू नै जा केते टका दबु 50 टका, मो से 50 टका देकी आ जनरो मैंगो किन लेबी, तार जहा दरकार थियो से पैसा नै कि से आउ कोन किन नबो, राइट? सो दिस इज two primary function of the money, very important. One is measure the value and medium of exchange. That's it. Is that clear? Okay, so anything that can measure the value and behave as a medium of exchange, that can be considered as money. Okay, so primary function, any doubt? Then next is secondary function of the money. कि money primary function आमे बुझी गलु. What is the secondary function? For example, गोटे car रो primary function कोन? गोटे जगारु आ गोटे जगह को जिबा पाई, right? That's what we call it as speedy transport. That is the primary function. कि गोटे जगारु आ गोटे जगह को जिबा पाई. What are the secondary functions? The comfort, the AC, security. कि भाई जदि मु गोटे normal से जो टैक्सी रे जाई थांदी, को टैक्सी जो रिक्शा, राइट? रिक्शा रे जदि जाई थांदी तो मते कोन हेताना बिकॉज़ चारिपटे कवर नाही, मे बी मोर जिंस पत्र के टनाटडी करके जिंस बोई की भिडी की नै जिबे, राइट? सो सेथिरे सिक्युरिटी कंसर्न अछि. बट जदि कार रे डोर फोर लागि छि देन सिक्युरिटी कंसर्न कमी जिवो, राइट? सो देयर आर लेस लाइक it is more secure in while going to the car. So eta hoji dar secondary function, it is not the primary function. Primary function is the transport, right? So similarly money ra secondary function kona na, it is behaving as STD. kona it can store the value. Okay, it can store the value, it can store the value. T for it can transfer the value, and D for deferred payment. Is that clear? STD. First primary function, what is money? Now money is nothing but it is a medium of exchange and it can measure the value. The secondary function is it can store the value. For example, तुमको salary मिलला तो तुम तम बैंक अकाउंट रे से पैसा टाको स्टोर कर देला. Then what is white money and black money? कि जो पैसा टाको तुम पैन कार्ड सहित लिंक करके गवर्नमेंट को शो कला, that is considered to be white. And the money which is not linked with PAN card or the money which is not stored in bank or digital format, government को शो ही करा हलानी, that is considered to be
black money. Okay, तो बर्तमान मनी को तमे स्टोर करि परिबो, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट इज ए सेकेंडरी फंक्शन. देन मनी को आउ तमे कोन करि परिबो ना, यू कैन ट्रांसफर आल्सो. तो ट्रांसफर ऑफ द मनी, लाइक फॉर एग्जांपल मु गोटे अकाउंट को आ गोटे अकाउंट को ट्रांसफर करूची कोन डिजिटल वे रे पैसा पळेला सेटू मो अकाउंट रे 1000 टका थिला 500 टका मु पठे देली तम पाखु 500 टका पळेला, दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, करेक्ट नो. So that transfer of value is considered to be secondary function of the money. And the last one is default payment. For example, मते गोटे iPhone किनिबार अछि एंड आईफोन टा वर्तमान 80,000 टका पड़ुछि, देन मु कहबि कि प्रति मास रे मु 8,000 10 मास रे जदि मते सुबियार अछि, देन ईएमआई, करेक्ट ईएमआई. सो मते 9,000 टका लेखे दବାକୁ पड़िबो इंस्टॉलमेंट रे. सो दिस आल्सो यू कैन डू थ्रू मनी. सो दीज आर द secondary function of the money. So primary function हमें देखिले, it can measure the value, it can medium of exchange. Okay, this is the primary function. Secondary function we talked about STD. Then there are something called contingent functions, right? So STD, any doubt in STD? Okay, now contingent functions जोड़ा होची कि ना मनी आल्सो बिहेव एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोन कि जति जनक पाखरे पैसा नथांदा, देन जमे जो घर द्वारा कहउछ ए सब किछि हेई कि नथांदा, तो मनी अछि बोली गोटे बर्तन गोटे फॉर एग्जांपल मु एना जॉब करूची, जॉब रु मते पैसा मिलला, से पैसा को बर्तन मु सर्कुलेट करबी, मते गोटे घरटे दरकार, बर्तन घर दरकार माने मु कोन करबी, से पैसाटा को मु जनकू देबी गोटे कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई मते मो पे गोटे घर तयारी कर दियो. से कॉन्ट्रैक्टर कोन करबो ना, से कॉन्ट्रैक्टर लोकन को आनिबो, लोकन को द्वारा काम करेइबो, किछि तो तयारी माने जिंसर डिमांड करबो कि जेमति रॉड हे गला, सीमेंट हे गला, बाली हे गला, यार डिमांड बढ़िबो. तो डिमांड बढ़िले एक रे तो फास्ट लैंड पई से डिमांड करबो, लेबर पई डिमांड करबो, एंड ताको पैसा भी दरकार हो, मे बी एक्स्ट्रा पैसा से लोन आनिबो कोटो बैंक रु, एंड जेति की खर्च हो अल्टीमेटली मते कहबो कि भाई तम घरे तमे मते 50 लाख टका देइतिलो, कोटी टका खर्च तो एक कुछ डिफरेंट फैक्टर्स आसीगले कोन गोटे लैंड आसीगला, गोटे लेबर आसीगला, गोटे कैपिटल. सो दीज आर द फैक्टर्स, राइट. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोन हमें कहउछे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल इज दैट क्लियर. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पिलर 4 रे भी मु कहबे एटा को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन रे को तीनटा इंपोर्टेंट ना, फर्स्ट होची लैंड दरकार, खाली लैंड थिले हबनी, वी रिक्वायर्ड आल्सो लेबर, एंड खाली लैंड आ लेबर थिले हबनी, लेबर कोन मागणा खटिबे कि ऑब्वियसली खटिबेनी, तांको पैसा दरकार, तो वी रिक्वायर कैपिटल आल्सो. जो दिबेनी हमें बैंकिंग सेक्टर को हमें ऑलरेडी कवर करिया को जाउछे पिलर 1 रे. इज दैट क्लियर? पैसा अछि बोली प्रोडक्शन तमे जाई परछो, नहले पैसा नथले प्रोडक्शन को जाई पार नथानो. एनीवे, सो देन देयर इज ए कांसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो बर्तमान जेमति हमें कहले कि सर्कुलर फ्लो केमति ना, आ पाखरे इनकम थिला, ये कोन कला सेटा नै कि बैंक को देला, बैंक कोन कला, बैंक या एलआईसी जो माने पैसा रखले, गोटे बिजनेसमैन को पैसा दरकार, बिजनेसमैन सेठी लोन नेला, किछि गोटे प्रोडक्ट डेवलप कला, ए प्रोडक्ट को ये किनिला, देन ये भी किछि बिजनेसमैन को पैसा देला. बुझिला ना, बुझिला ना. देन ए बिजनेसमैन को ये जेते पैसा देला, बिजनेसमैन कोन करबो, लोन रे काहू दबो, जो लोन रे इंटरेस्ट ताको लोन टाको सुजियो काहू, बैंक को, बैंक को इंटरेस्ट सहित प्रिंसिपल भी दबो. सो यू सॉ द सर्कुलर फ्लो. बुझिला ना नहीं. गोटे लोक थिला, ता पाखरे पैसा थिला, फॉर एग्जांपल मो पाखरे पैसा अछि 50,000 टका. माय वॉइस इज बफरिंग, इज इट फॉर एवरीवन? लैग हो कि किछि मो वॉइस? ओके, गिव मी अ सेकंड ना. व्हाट अबाउट नाउ? इज इट फाइन और सर्कुलर फ्लो रे हमें कोन कहले, लेट मी गो लिटिल स्लो आल्सो. ओके, सो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी रे हमें कहले कि मो पाखरे पैसा अछि, मो पाखरे जेहेतु पैसा अछि सेटा मु सेटल करिया चाहते, तो मु सेटा कोठी नै रखिबी, बैंक रे रखिबी. बट बैंक रो काम कोन, जण कोठु नबो आ जण को लोन रे दबो. तो जेतले लोन रे दबो, से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रखी कि लोन रे दबो, आमे राइट. तो जदि से एक्स्ट्रा इनकम इंटरेस्ट रखी लोन रे देला, देन सेटा जीवो कहा पाखु, रतन टाटा सर को पाखु जीवो. सी एटा नै कि पैसाटा करिवे कोन, से किछि गोटे डेवलपमेंट करिवे, मे बी भाबिनियो से गोटे टाटा नानो कार तयारी कले, तो मो पैसा रु ही रतन टाटा सर टाटा नानो तयारी कले, टाटा नानो तयारी करके से बिकिबे ना, आड भाबिनियो मु ही किनिली, देन मु भी तांको किछि पैसा देबी, से पैसाटा से किछि प्रॉफिट रखिबे, देन जो लोन आनिथिले से लोन सुझिबे, बैंक मते अल्टीमेटली कोन दबो, मो प्रिंसिपल सहित मो इंटरेस्ट दबो. बिकॉज़ मनी इज देयर, बिकॉज़ मनी इज देयर, जोथि में कि हमें कहि परिबा कि there is a possibility of circular flow of income.
फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल मु चा पीवा को गली 10 टका देली चा वाला क्षीर आनिया पई से 10 टका से आउ जण को देला जे क्षीर आनिला क्षीर वाला से देखिला कि ता गाई परी ताकू चोकड़ वगैरह जहाँ दरकार से 10 टका नहीं से आउ गोटे मार्केट को गला से चोकड़ आनला जहाँ को चोकड़ आनिया पे गला सो देखो 10 टंका बर्तमान केतेटा काम कला केतेटा प्रोडक्शन वाला काम कला फास्ट तो मु गोटे चा पी देली से चा जे बनेछि ता पे क्षीर दरकार सेम 10 टका से क्षीर भी आनला जो क्षीर आनी तार चोकड़ गाई चोकड़ आने से भी 10 टका को यूज कला सो मनी इज मोबिलाइजिंग करेक्ट नो मोबिलाइजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज दैट क्लियर दैट इज द कंटीजेंट फंक्शन ऑफ द मनी one is primary function of the money it can measure value and medium of exchange the secondary function of the money that we called as std it can store the value it can transfer the value and it will be for use as deferred payment like emi then contingent function नाम है कहो जे mobilizing factor of production any doubt okay now coming to this okay now we know what is money so simple case money ର ଦୁଇଟା condition to something to become money किसी भी जिनस को जदि आमे ताको कहो money it can be barter money it can be like commodity not barter money barter is nothing but barter is not a money because there is no medium of exchange right there is nothing called measuring the value right money means measure the value medium of exchange these two things you have to keep in mind every day now the thing is मते तमे कुह आगुरु barter system रो जते commodity money आसिला commodity माने किछु गोटे भाबिनियो कौडी रे करा होतला गणा होतला कि तमे ती कौडी दे दियो देन ताको आमे मानि लबो कि दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मनी फॉर एग्जांपल तमे कहू कि आइसक्रीम वाला आसिला एंड आइसक्रीम वाला कहू गोटे ग्लास चावल नै आसो देन गोटे ग्लास चावल रे म तमु गोटे आइसक्रीम दे देबी देन कैन आई से दैट चावल जोटा थिला ऑल्दो इट इज बिहेविंग लाइक ए बार्टर सिस्टम बट से चावलटा को बर्तन गोटे कमोडिटी भले म नै कि ताको देली ना देली सो से चावलटा is it measuring the value yes it is measuring the value कि गोटे ग्लास चावल रे मते गोटे ही आइसक्रीम मिलियो दी ग्लास चावल देले मते दीटा आइसक्रीम मिलियो so it is measuring the value is it a medium of exchange yes it is also behaving as a medium of exchange because मु चावल देला परे से मते गोटे आइसक्रीम दउची that means can I say that commodity is money से commodity टा को मु मनी कहि परिबे ना कहि परिबे anyone can I say the commodity is money yes or no in the chat section बुझियो नहीं कि कष्ट लागु तो ओके yes what about others okay so एतिकी तो आमे जानले कि जो थ्रू रे आमे मेजर करि पारुचे ताको आमे मनी कहू my question is now if you see on the left side there are items right indian rupee coin notes demonetized 500 1000 so we never know direct question gote statement wise as they okay dollars yuan yen euro g से t bills share bonds dd check marshall bonds and bitcoins so these are on the left side and now we have to figure it out whether they can be considered to be money then we'll talk about fiat money then we'll talk about legal tender now money part is over money simple thing primary function measure the value medium of exchange now can you tell me indian rupee can I consider it as a money yes no please write it in the chat section indian money is it money or not indian rupee okay this is money fine coins and notes those are money central bank digital currency cbdc e rupee we call it as e rupee e rupee rupee not rupi rupee so cbdc is also money because it can measure the value and it will can behave as a medium of exchange also demonetized 500 or 1000 notes was that a money that was a money right see it is money because still you say that okay this is 500 note 500 note it can have this value correct no 500 टंका रे मु पांचटा चा दे परिबी देबी कि देबिनी दैट इज अ डिफरेंट कांसेप्ट करेक्ट नो कि सेटा मु नेबी कि नेबिनी सेटा हमें जतले लीगल टेंडर कथा कहबे सेतले हमें डिस्कशन करिया बट एटलीस्ट फॉर द टाइम जो यूटिलाइज होतला दे आर स्टिल कंसीडर्ड टू बी मनी दे कैन मेजर द वैल्यू दे कैन बिहेव एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिहेव दे कैन बिहेव am I right कि डिमोनेटाइज जो 500 और 1000 हेजी सेटा गोटे एक्ट द्वारा हे जेसी कि चलो आरबीआई एक्ट अनुसार गोटे कोहा हेसी कि गवर्नमेंट चाहिले से माने कहि देबे कि आरबीआई देन अनाउंस करबो कि भाई
ଆଜିଠୁ ଏଇ ଡେଟ୍ ପରଠୁ ଆଉ ଆମର 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଚାଲିବନି। ତ ଯୋଉଟାକୁ ସେ କହିছে ଚାଲିବନି ମେ ବି କାଲି ସେ କହିବ କି ଏଇ ପରଠୁ ଯୋଉ ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଗୁଡା ଅଛି ସେଗୁଡା ଚାଲିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ still 500 is considered to be money, correct? No, ଚାଲିବ କି ଚାଲିବନି ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଆସିବ ସେଥିରେ ଆମେ କହିବା ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର। ବଟ୍ ଫର ଦ ଟାଇମ ବିଂ all the demonetized notes they are considered to be money. Okay, they are money। ଯେତିକି ସେ ଯୋଉ 4 ଆଣା 8 ଆଣା କି ସେ ଯୋଉ ଥିଲା ସବୁ 10 ପଇସା 5 ପଇସା ସେ ସବୁ ହଉଛି ମନି। ଓକେ, ମନିରେ ତ ଆସିବେ ସେମାନେ ବିକଜ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ମେଜର ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବିହେଭ ଆଜ ଏ ମିଡିୟମ ଅଫ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଡଲାର, ୟୁଆନ, yen, euro are they money? Yes, barter system is not considered as money but commodity। See, barter system ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି କି କୋଉ କମୋଡିଟି ନଉଛ। ଯଦି କୁହାହେଲା କି ସେ ଯୋଉ ଚାଉଳରେ କେବଳ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନୁହଁ, ଇଭିନ୍ ତମେ ଚାଉଳ ଦେଇକି ତମେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି କିଣିପାରିବ, ଦେନ୍ ଚାଉଳ ୱିଲ୍ ବି ବିହେଭିଂ ଆଜ ଏ କମୋଡିଟି। ବୁଝିଗଲା ନା? सी बाटर सिस्टम इज वेरी क्लियर कि भाई मो पाखे टमाटो अच्छी पाखे आंब अच्छी, देन मु कहूँ टमाटो को आंब सहित एक्सचेंज, दैट इज ए सिंपल पार्ट ऑफ एक्सचेंज, नॉट मेजरिंग द वैल्यू। मु कहूँ जब चाउल रे मु मेजर करूँ आइसक्रीम, काली जब आउ गोटे लोक आसला आलू धरिकी से कहूँ कि भाई तुम गोटे ग्लास चाउल आण मु तुमको केजीटे आलू देवी, देन दिस राइस राइट इट इज बिहेविंग एज ए कमोडिटी व्हिच कैन मेजर द वैल्यू and which is a medium of exchange, then that commodity is a money। every commodity coins जो गुडा भी अच्छे commodities those are considered to be money, right? जदि से commodity है and commodity रा मु concept कहली commodity सेति बेला हबा जतले medium सी money माने ही medium of exchange and measure the value। okay, fine। now coming to dollar, yuan, yen, euro, these are money। government securities, treasury bills and all, are they money? what do you think? government securities, treasury bills, are they money? okay, yes, what about other? No, 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 okay। So the answer is no। Why? Because government securities and treasury bill, for example मो पाखरे गोटे government securities अछि, ठीक अछि, गोटे बॉन्ड पेपर अछि, से बॉन्ड पेपर टाकू मु नै कि जीबी एंड मु चा दुकान को जीबी, मु कहबी कि भाई मो पाखरे बॉन्ड पेपर टा अछि मते दीटा चा दियो, से दबो कि? See, it can measure the value but it cannot be a medium of exchange, correct? No, it cannot be a medium of exchange। So the money either it has to be in physical form or it can digital form which can measure the value, correct? No, which can measure the value। तो measure the value केमती कहबो? फॉर एग्जांपल मु कहबी कि मोर पाखरे जदी गोटे कागज अछि बॉन्ड सिक्युरिटी, सेटा को मु जदी देबी मते से गोटे कप चा दबो, दीटा बॉन्ड सिक्युरिटी देले से मते दीटा चा दबो, सेमिति तो कांसेप्ट ही नहीं, करेक्ट? नो, एमति न हो कि मु गोटे बॉन्ड पेपर नै कि जीबी मते कहबी कि से देखियो कि एठारे 50 टका लेखा अछि, 50 टका बॉन्ड गोटे अछि, मु ताकू गोटे चा देबी कि 50 टका दीटा बॉन्ड देला से मु ताकू दीटा चा देबी। सो से भले कांसेप्ट ही नहीं, correct? No, so that's why these government securities and treasury bills they are not called money because they cannot measure the value, neither they will behave as a medium of exchange। is that clear? fine। next coming to shares, bonds, dd, again same thing। no, share मो पाखरे भाबिनियो मोर डिजिटल रे वर्तमान मोर गोटे कंपनी रो 100 टा शेयर अछि, मु कहबी भाई मो पाखरे 100 टा शेयर अछि, तू केतरा शेयर लेकी गोटे चा दबो, से कहबो भाई 5 टा शेयर देकी चा लेबी, केमिति थोड़ी होउची, हो ही नहीं ना। सो शेयर्स, bonds, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, एटीएम, different type of card, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किराना कॉइन, कैसिनो कॉइन, फिल्म स्टार नोट्स, एगुडा मनी ही नुह बिकॉज सेतिरे भ्यालु ही तमे मेजर कर परिबनी। बर्तमान तमे मते को मो पाखरे 100 टा कार्ड अछि, तो 100 टा कार्ड रे जदी मु चा पेबी मु कहबी कि भाई मो पाखरे दीटा कार्ड अछि, गोटे एचडीएफसी रो आ गोटे एक्सिस बैंक रो, मते चा दियो, से दबो कि मते? से कहबो नाइ नाइ मु तो आशा करछु तम बारे गोटे इंडसइंड रो कार्ड थिया दरकार, एमिति होय कि? होय नै। सो these are the instrument to use money, am I right? These are nothing but the instrument where money is being used but themselves are not the money, they themselves are not the money, that's why these are not money। next, some sovereign coin, for example मार्शल आइलैंड रो या फिर वेनेजुएला रो तार पेट्रो निजर कॉइन, सोवरेन कॉइन, दोज आर मनी बिकॉज दे कैन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर द वैल्यू। सी बहुत क्लैरिटी सहित मु कहूची कि भाई मनी रे तमे ताकू इंडिया पर्सपेक्टिव रे देखोनी, जस्ट ताकू तमे देखो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव रे, जदी ये गोटे जिंस ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हेई परिबो ना नहीं एंड ये मेजर द वैल्यू करि परिबो ना नहीं, वैल्यू की ये मेजर करि परिबो ना नहीं एंड आकू नै कि मु एक्सचेंज किछि करि परिबो ना नहीं,
देन ताकू तमे मनी कहबा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव नॉट इंडिया पर्सपेक्टिव जेतला हम आसे सेतला हम लीगल टेंडर कथा कहबा फियाट मनी कथा कहबा इज दैट क्लियर बिटकॉइन is it a money bitcoin is it a money yes bitcoin is a money because you can measure the value and you can make it as behaving as a medium of exchange this part is done coming to next the next concept is called fiat money कौन कहली फास्ट कथा हला मनी मनी रो तीटा कंडीशन इट कैन मेजर द वैल्यू एंड इट विल बी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज नाउ व्हाट इज फियाट मनी मींस द फर्स्ट कंडीशन इट हैज टू बी मनी सबुथिर दीटा कंडीशन मु कहबी फियाट मनी रो फर्स्ट कंडीशन कोन इट हैज टू बी मनी दैट मींस जदी एटा मनी हे दियो दैट मींस इट इज मेजरिंग द वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज होंगे नहीं करेक्ट नो ओके द सेकंड कंडीशन ऑफ फियाट मनी it has to be issued by the central bank or king queen or government now you understood that means there has to be a authority if I will tell more clearly there has to be authority कि किए गोटे अथॉरिटी एमिति न हो कि काली मु गोटे कहबी घर कि गोटे काठ काटी देबी गोलिया करके देन काली कहबी कि भाई एटा भी मनी am I authorized to say that is it a money answer is no because I'm not central bank neither I'm a king neither I'm a queen neither I'm a government is that clear but if government will say कि काली जदी काठर गोटे कॉइन टे से तयारी करले काठ को काटी देन गवर्नमेंट डिक्लेयर कला कि भाई एटा को भी हमें मनी कहबो इट इज गोइंग टू बिहेव एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट इज गोइंग टू बिहेव एज ए मेजरिंग द वैल्यू then that is considered to be money plus that is considered to be what fiat money so fiat money ro condition kono first hoji it has to be money second condition is it has to have a authority that is the two condition for fiat money hope it is clear now you tell me indian coins notes cbdc fiat money correct so the thing is you have to see whether it is issued by the central bank or government king or queen the cbdc jo so central bank issue करछि and it is a money that both the conditions satisfied then it is considered to be fiat money any point which is not satisfied it won't consider to be fiat money is that clear both has to be simultaneously true it has to be money and it has to have authorized demonetization 1000 rupees जोड़ा demonetize हो जाइछि सेगुडा मनी थिला ना नहीं ऑलरेडी हमें देखिथिले सेगुडा मनी थिला सेगुडा किए इशू करैथिला गवर्नमेंट ही इशू करैथिला ना 500 1000 टका नोट तो गवर्नमेंट इशू करैथिला दैट मींस इट इज आल्सो हैविंग ए अथॉरिटी एंड जदी अथॉरिटी अछि देन इट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी फियाट मनी क्लियर 500 और 1000 नोट्स दे आर कंसीडर्ड टू बी फियाट मनी देन डॉलर युआन येन और यूरो जोटा तांको कांसेप्ट रे राइट अमेरिका रे डॉलर चलु जे तो डॉलर ता होची मनी डॉलर ता को अमेरिका रो फेडरल बैंक से ताको देइची अप्रूवल देन सेटा भी एही जे तमर कोन फियाट मनी करेक्ट now coming to government security treasury value by default we don't know this is not money but is it approved by government yes it is approved by government security treasury bills those are nothing but the government bills government assured bills correct no government assured bonds so government द्वारा तो assured but is it money answer is no that's why it is not fiat money any doubt खाली जदी government security treasury bill आसीबो related to fiat money the answer would be no any doubt in this fine share bonds dd neither it is money neither it is issued by such central bank government king or queen because for example share किए इशू करथि गोटे कंपनी इशू करथि एठी कंपनी रे ए चारटांग भीतर कोठी कंपनी आसी कंपनी थोड़ी किंग कंपनी थोड़ी गवर्नमेंट कंपनी थोड़ी क्वीन नाही सेंट्रल बैंक सो वी नेवर नो एटीएम कार्ड बैंक इशू करथि बैंक तो ए चारटांग भीतर आसुई नै सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई करेक्ट नो सो आसुई नै सो बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट ए फियाट मनी द नेक्स्ट वन इज सोवेरिन वेनेजुएला रो जो पेट्रो कॉइन अछि that is money and it is issued by Venezuela government that's why it is called fiat money see fiat money again money and fiat money it is not as perspective to India it is global level रे ताको हमें fiat money कहै but जेतले मु कहबी वर्ड ओटे यूज करबी लीगल टेंडर देन सेठी कंट्री पर्सपेक्टिव आजो कि कंट्री रे कोटा चलिबो is that clear bitcoin it is money but it is not authorized by central bank neither government nor king nor queen because it is authorized by whom Satoshi Nakamoto right
So he is not king, he is not queen, neither he is government, neither he is central bank. That's why it is not fiat money, because there is no authority for Bitcoin. So Bitcoin is not fiat money. Hope it is clear, right? Now the concept is, what is legal tender then? So money we understood, fiat money we understood, then legal tender को हबो कि जेतेबेले at present is it legally valid for transaction in India as per the coinage act or RBI act? coinage act और RBI act रे जेतेबेले सेमाने डिक्लेयर करिवे कि आजि परठू कौनसी लेंडर आकु डिनाय करि परिबोनी नबा पाए. दैट मीन्स जदि मु काली बैंक रु 100 टका धरिक आसी, काली जदि मु बैंक को नै कि मु 100 टंकार किछि जिंस देबी, बैंक मना करि पार नथिया दरकार. तो जो जिंस को बैंक मना कर दबो, दैट मीन्स बैंक कहतो कि एटा होची लीगल टेंडर ही नो. बुझियला ना बुझियला कि गवर्नमेंट कहतो कि भाई एटा न ले भी चलिबो. फाइन, करेक्ट. तो मते को आरबीआई रु मु 100 टका धरिक आसी, काली आरबीआई को मु नै कि गोटे डॉलर टे देबी, आरबीआई मना कर दे पारे. कहीं भाई आमे तो 100 टका देथिलु, तू मते डॉलर कोन दउछु, मु हैरान हेबी, मु एटा नेबी. तो से मना कर दे. दैट मीन्स डॉलर इज नॉट ए लीगल टेंडर इन इंडिया. सो व्हेन आई एम सेइंग लीगल टेंडर, इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया कि या फिर पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिका. जदि काली क्वेश्चन आसला कि अमेरिका रे डॉलर होची गोटे लीगल टेंडर, इज दैट ट्रू और फॉल्स? True, right? America रे dollar होची legal tender, but India रे dollar is not a legal tender. That's what if you see Indian rupee, coin, note, CBDC, जो गोटा India रे fiat money, तो legal tender का concept कौन? ना, first of all, the first condition has to be, it has to be fiat money. Second, the lender should not deny to accept it. Lender should not deny to accept it. Means जे मते पैसा देछि ताकू मु जेतले पैसा फेरोछि, that is he is the lender, right? ताकू मु जेतले पैसा फेरोछि सेटा नबाकू बाध्य. देन कोन नबाकू बाध्य? बेस्ड ऑन कॉइनेज एक्ट और आरबीआई एक्ट. आरबीआई एक्ट अनुसार मेंशन कराइ दियो कि भाई 20 पैसा आउ चालुनी, तो 20 पैसा आउ नबनी, बिकॉज़ 20 पैसा इज नॉट लीगल टेंडर. बट इज 20 पैसा, इज दैट फिएट मनी? 20 पैसाटा फिएट मनी ना नहीं? कोड़े पैसा फिएट मनी ना हो? हाँ ना नहीं? यस नो, यस नो, यस, करेक्ट. नो, 20 पैसा फिएट मनी, बट इट इज नॉट ए लीगल टेंडर बिकॉज आरबीआई एक्ट या फिर कॉइनेज एक्ट रे सेमाने मेंशन कर देबे कि भाई आजि परठू आउ 20 पैसा चलीबा. होप दिस इज डन. नाउ यू अंडरस्टैंड कि कॉइनेज एक्ट रे जहां जहां अछि, फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी, कॉइन, नोट, सीबीडीसी, एगुडा फिएट मनी करेक्ट अछि. Then as per the coinage act RBI, lender mana kari paribani, both conditions satisfied, that's why it is the legal tender. What about others? Demonetized note, according to fiat money, yes it is fiat money, but according to coinage act or RBI act अनुसार से मैंने already deny कर दीजिए कि भाई आज पर एटा चलिबो ही नहीं. That means जेहेतु चलिबो ही नहीं, it is not going to be a legal tender, but it is money, it is fiat money, but it is not a legal tender. डॉलर, युआन, येन, यूरो या विषय रे कोनोसी मेंशन नहीं कॉइनेज एक्ट या फिर आरबीआई एक्ट रे कि तमे डॉलर आउ युआन को नै परिबो. मींस गोटे लेंडर मना करि परिबो ना करि परिबो नि ता ऊपर कोनोसी लेखा नहीं, तेनु लेंडर चाहिले मना कर दबो. दैट व्हाई इट इज नॉट लीगल टेंडर. एंड जोठी जोठी तुमको देखा वाला हाथ वाला चिन्ह दीटांक जदि साइमल्टेनियसली ट्रू, देन ओनली इट विल गोइंग टू बिकम लीगल टेंडर, और एल्स इट इज नॉट गोइंग टू बी लीगल टेंडर. एनी डाउट? Money, fiat money, legal tender. Any doubt? Okay. Now the important thing was related to demonetization, right? Ki 2000 note not demonetized but withdrawn from circulation. Very important word. What it says? It is not demonetized. There is no concept of demonetization. Means it is withdrawn from the circulation. See, demonetization in the sense it is saying that it is not going to be legal tender. So the question has ki 2000 rupees is not a legal tender. Is that true or false? Or I will say, No, sir. 2000 rupee money is a legal tender. True or false? Is a legal tender. False, sir. True. It is not demonetized. It is a legal tender. See, it is has been withdrawn. That means see, legal tender केतेबेले होबनी जेतेबेले तमे कॉइनेज एक्ट रे कहबो कि भाई आमे ताकू डिमोनेटाइज कर देलु, आर मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं. बुझियो कि ना बुझियोनी? तो जे लेंडर अछि से मना कर दो, किंतु जे माने कोन कहले कि भाई सितंबर भीतर जाई कि तमे बैंक को दियो, बैंक नबा पई बाउंड. दैट मींस ये डिमोनेटाइज हेनी. बुझियला ना बुझियला? So 2000 money not demonetized
but it has been withdrawn from the circulation. So according to 2023 ର June ର report, will the RBI withdraw the legal tender of 2000 notes after September 30? September 30 ପରେ ସେମାନେ withdraw କରିନେବେ କି? Now question is 2000 is a fiat money? Your answer should be yes. Am I right? Fiat money ତ ରହିବ ନା, fiat money ରୁ ତ ହଟିବନି ନା, fiat money ତ ରହିବ, ଚାहे ସେ demonetize ହେଇଯାଉ या न हो. Is it a legal tender? Yes, it is a legal tender. କାହିଁକି? Because ये withdraw ହେଇଛି, demonetize ହେଇନି. ବୁଝିବ କି ନା ବୁଝିବନି? ये withdraw ହେଇଛି means लोक तमे माने सर्कुलेशन रे आननी माने मु आउ जदी काहू 2000 टका देबी से न नले चलिबो किंतु तमे बैंक को देले बैंक नबा पे बाउंड, राइट? So is 2000 is withdrawn from circulation? Yes, circulation ru withdraw होची. Is 2000 demonetized? Not yet. Demonetization hey ni 2000 rupees. So as of January 2024, this is the status as per official RBI website. So January over 97 of 2000 notes returned, only 9330 crore worth notes not yet returned. Means 9330 कोटी रो 2000 टंकिया नोट एपर्यंत रिटर्न हेनी, बट around 97% रो 2000 नोट बैंक को रिटर्न हो जायछि. Is that clear? So this is PYQ. This is sir. सर एबे तले 2000 टका नोट तो लीगल टेंडर मन तो चलिबो माने एक्सेप्ट करिवे कि नबा पे? See, now the difference between legal tender is based on the Coinage Act. Correct? No, Coinage Act or RBI Act. RBI Act जेबेटू कहि दबो कि भाई आ केही नेबेनी एटा को, बैंक भी नवा छाड़ दबो. करेक्ट? नो, एबे तमे जाय कि 5 टका गोटे नोट बैंक रे देखि दियो, बैंक नबो पुराना 5 टका नोट. What do you think? No sir. Nobody. That means it is not a legal tender. But जदि 2000 टका से कोन कहला सेप्टेम्बर भीतर तमे विथड्रॉ माने लोकल जो करेंसी सर्कुलेशन कोठी हुए, नॉर्मल लोकों को भीतर हुए. करेक्ट? नो, कि बैंक नबो, बैंक देन से 2000 टका नोट को देई परिबोले कोथिरे ना लोन रे. लोन रे देले सेकेंड सर्कुलेशन को पळे आसीबो ना. बुझियो ना बुझियो नि? Yes sir. हाँ, that means we are trying to withdraw it from circulation, but we are still considering it as a legal tender. So एपर्यंत official notification किछ आसीनी कि 2000 टका को हमें legal tender रो हटाई दबो बोली. Means legal tender रो केतले हटाइबे जेतले act रे माने मेंशन करिवे, हां कि नहीं, कि कॉइनेज एक्ट हैला या फिर आरबीआई रो एक्ट हैला, सेथरे मेंशन हबो कि भाई आजिठू 2000 टका जो नोटटा हमें छापिथिलु जोटा कि ए सीरीज रो नोट ताकू हमें कहि दउछु आजि परठू ताकू केही ननेले भी चलिबो. That means it is not going to be like demonetize हिजबो. Demonetize वाला रो आंसर आसीने पाबा. Hope it is clear. हां सर, बट सेप्टेम्बर 30 पर धर जो एनी केस का पाखरे अछि तो से चाहिले एटा माने चलिबो ना बैंक ताको एक्सेप्ट करिवोनी नबा पे? Depend on bank. Depend on bank, but that kind of question won't come, but it is depending upon the bank. बैंक चाहिले ताको नै परियो, बट गवर्नमेंट रो रेगुलेशन थिला कि भाई सेप्टेम्बर 30 भीतर जहा पाखरे पैसा अछि से माने कि दे दियो, जोति बेंगी 97% अछि, बट स्टिल 9330 कोटी रो 2000 टंकिया नोट ए पर्यंत रिटर्न हेनी, जोटा कि रिटर्न होबा कथा. तो सेटा चाहिले बैंक नै पारे न नै पारे. बट मु कहूची कि कॉइनेज एक्ट तमे बर्तन बैंक कथा कोनी ना ही तमे को कि गवर्नमेंट कथा. एक्ट रे लेखा हेलानी कि भाई हमें डिमोनेटाइज कर दबो बोलिया को. जे पर्यंत एक्ट रे लेखा नहीं से पर्यंत सेटा डिमोनेटाइज हबनी, से पर्यंत सेटा लीगल टेंडर हेकी रहइबो. Is that clear? ओके सर. Okay, I am talking from the perspective of act rules, not कि काली कि गोटे मिनिस्टर ठिया कहि देला फाइनेंस मिनिस्टर हो कि एक्सजेड जी भी हो सी गोटे कहि देला सेटा किछि मैटर करे. रूल रे जते पर्यंत रिटेन न लेखा हिची से पर्यंत सेटा लीगल टेंडर. Okay, now the question is why? Because there was a question, right? PYQ सेति भाई मु जस्ट 2000 टका नोट वाला डिस्कशन करू छे हमें कि why this 2000 टका नोट जोटा थिला हेटा विथड्रॉल काहे केला? Because 2000 notes were issued as a temporary measure to address shortage of the currency. जेतले नुवा नुवा स्टार्ट हेतिला डिमोनेटाइजेशन सेतेबेले से माने कोन कले 100 200 500 सहित से माने 2000 टका को ऐड करथिले, बिकॉज़ एटी गोटे शॉर्टेज थिला, शॉर्टफॉल थिला. हठात कार गोटे पैसा दरकार से एते पैसा 100 टका गोटा खाली रिलीज हेतिबो भाबिलो गोटाय पैसा से धरि दिबो. दैट्स व्हाई दे जस्ट ट्राई टू यूज इट फॉर a temporary measure. This note is not commonly used for transaction. RBI's clean note policy to ensure availability of good quality bank notes to member of public. गोटे थाए सॉइल रेट. करेक्ट? नो, गोटे थाए कोन सॉइल रेट. सॉइल रेट माने केते जल्दी से जते तमे सर्कुलेशन करिवो गोटे नोट टे से चिरी फाटी जीवो, राइट? तो दैट इज व्हाट की सॉइल रेट क्लीन नोट पॉलिसी हमको बेटर नोट दरकार जोटा कि अधिक तार सॉइल रेट बहुत कम थिवो, राइट? कि से बहुत दिन चलिवो. जदि बहुत दिन से चलिला दैट मींस आरबीआई को आ नुवा नोट ता बदले प्रिंट करिवार नै, बिकॉज़ गोटे नुवा नोट प्रिंट करिया पय हेले भी पैसा खर्च हो, राइट? सो दैट्स व्हाट आरबीआई रो क्लीन नोट पॉलिसी रे से माने कहउछन कि वी रिक्वायर्ड
the notes that will be available in the circulation, that has to be good quality bank note. 2000 note paper has a lifespan of 4 to 5 years. Since most of these notes were printed in 2016 or 17, by 2023 its paper quality may start to deteriorate. So there is no mention, कोठी भी mention नहीं नथिला कि it is related to fighting back black money corruption, fake notes or by ISIC दाऊद RBI press release एमिति कोठी mention है कि भाई आमे ब्लैक मनी को फाइट या फिर करप्शन को फाइट करिया पई आमे 2000 टका को विथड्रॉ करूछु. It is related to, the reason mentioned is related to official reason. See, these are the official reason given by RBI. गोटे होची तमरो क्लीन नोट पॉलिसी वाला कि सॉइल रेट जदि यार लाइफ स्पान देखियो 4 रु 5 वर्ष, बट आमे चाहू कि से नोट 10 वर्ष चालू, किंतु 2000 नोट टेम्पररी मेजर पई यूज हेतिला जो कि तार लाइफ स्पान ही बेसी नै, तेनु आमे ताको नै जिबा पई चाहू. इज दैट क्लियर? Okay. The next concept. This is also OPSC or PYQ, Grisham's law. OPSC PYQ. Give me a second. Hmm. 2018 question. What is this Grisham's law come into operation? So Grisham's law टा ही कोन? तो Grisham's law अनुसार कहीं 2018 पचाराला ने 2016 रे जेतले 2017 डिमोनेटाइजेशन वाला सिचुएशन ता पर ये क्वेश्चन आसी वाला देखो. तो ता रिलेटेड कांसेप्ट कोन थिला कि व्हाट इज ग्रिशम लॉ? ग्रिशम लॉ इज रिलेटेड टू गुड वर्सेस बैड मनी और सॉफ्ट वर्सेस हार्ड करेंसी ना कोन ना. जदि तमे देखिबो कांसेप्ट होची मु क्वेश्चन को पढाउची. तो एठी कोन होची ना, फॉर एग्जांपल इट्स रिलेटेड टू टोकन मनी एंड फुल बॉडीड कॉइन, टोकन कॉइन एंड फुल बॉडीड कॉइन. तो ता पूर्व मते टोकन कॉइन एंड फुल बॉडीड कॉइन टिके करे दबार अछि. होप यू नो टोकन कॉइन एंड फुल बॉडीड कॉइन, राइट? जणा अछि ना नहीं? Okay. So this is related to intrinsic property of the value, right? Intrinsic value of a coin. So what is the intrinsic value? For example, गोटे coin अछि, से coin टाकू तमे ता व्यतीत आउ कोनोसी रूप रे यूज करि परिबो कि? For example, आगुरु तमे देखितो 5 टंकिया जो coin थिला, 5 टंकिया coin बहुत मोटा थिला, हम राइट? एबे जदि 5 टंकिया coin देखियो से चिक चिक करूची आ पतळा आसुची, छोटिया डी हे जाई. ट्रू और फॉल्स? करेक्ट. तो जेतले 5 टकिया कॉइन टा मोटा थिला सेटा को से माने कोन करथले, स्मगलिंग पई यूज करथले. बांग्लादेश रे बर्तन 5 टकिया कॉइन टा रे जेति की धातु थिला, जेति की मेटल प्रॉपर्टीज थिला, से गुडारू से माने रेजर तयारी कर करथले. जणा पडला कि 5 टकिया कॉइन गोटे जदि मते मिलिला मु 5 टा रेजर तयारी करथि ब्लेड, एंड से गोटा का ब्लेड को मु 2 टका लाखे बिकिले मते 10 टका मिलियो. दैट मींस खाली जदि कॉइन टा को मु एक्सचेंज करियो मते 5 टका रा वैल्यू रे एक्सचेंज हो. बट जदि ताकू मु चेंज करके रेजर तयारी कर देबी and ମୁଁ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦେବି, that means ଅଧିକ ହେଇଯିବ. that means this is considered to be a good money. good money means ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହୋଲ୍ଡ ରେ ରଖି ଦେବି, ତାର सर्कुलेशन ही हबनी. am I right? that means circulation केतेले हबनी जेतेले तार निजर फेस वैल्यू, this 5 rupees is nothing but face value of the coin, कि से coin रे केते टका लिखा है. that is what we called face value, and this is what we called intrinsic value. तो फेस वैल्यू होची 5 टका, बट इंट्रिंसिक वैल्यू तार एक्चुअल वैल्यू जदि ताको देखिबो अदर वे रे यूज करी 10 टका. So whenever the intrinsic value will be more than face value, it is considered to be a good money. Is that clear? So generally whenever it is a good money, this is going to be hoarded. ताकू लोको छपेई देबे. True? स्मगलिंग हला माने काहे गेला? That means ताकू सर्कुलेशन ही होना लानी, से सब पैसा उडा बाहर को गला आन हठात बाहर वर्तन पूर्ण इंजेक्ट हबो रेजर थ्रू रे, ब्लेड थ्रू रे यूज. बुझिला ना बुझिला नहीं? So Grisham's law, if you see, where is OPSC? Sir, see, sir, if I will say that commodity money has intrinsic value. Intrinsic value, correct. So those are considered to be good money. So जदि तमे देखिबो कौड़ी, गोटे कौड़ी देखि तार भाबिलियो तमे 10 ग्राम रो चेंज करछो, एक्सचेंज किछ गोटे करछो, किंतु से कौड़ी को जदि तमे नै कि बाहर को देश रे बिकिबो, जणा पडला कि तुमको 100 टका मिलुची. दैट मींस कौड़ी रो इंट्रिंसिक वैल्यू 100 टका, फेस वैल्यू तो वर्तमान एठी 10 टका देखा होची. बुझिला ना बुझिला? तो जदि लोकन को जणा पड़ी गला कि भाई ये कौड़ीटा मु नै कि बाहर देले 100 टका हबो, देन मु एठी को सर्कुलेशन केमति चले, मु तो 10 टका रे कागु देबी नै से कौड़ी. जदि मु कहबी गोल्ड कॉइन, केते जण अछथि गोल्ड कॉइन एबे यूज करि परिबे सर्कुलेशन में? केही करिबेनी भाई. जहा बाकू गोल्ड कॉइन आसीबो से होर्डिंग कर दबो, से लेकि बैंक रे थोई दबो. करेक्ट नो? काहे ना गोल्ड कॉइन ऊपर कोन लिखा छै, लेट भाबिले 1000 टका लिखा छै, किंतु गोल्ड रो जति कि मेटल अछि जणा पडला कि 10 ग्राम रो मेटल अछि, गोटे ग्राम 5000 हेले 10 ग्राम 50,000 टका.
तो भाव मु ताको 1000 टका एक्सचेंज करी 1000 टका देकी कोठू गोटे जिंस आनिबी ना मु ताको रखी देकी 50,000 टका बिकिबी तरल देकी गोल्ड ज्वेलरी तैयारी कर देबी correct. That means intrinsic value is more than the face value, and whenever there is a intrinsic value which is 50,000 which is more than face value, the money will be voted. That means the answer will be this one, because this is considered to be good money. Why good money? Because it has more intrinsic value. That's why the more intrinsic value, the other concept, other term is called, what do you know, full bodied coin. धातु भरी भरी ही करछे एथे. You understood what is full bodied coin now? कि फेस वैल्यू टू तार इंट्रिंसिक वैल्यू अधिक फुल बॉडीड कॉइन धातु भरी हे गेछि गोटे 5 टका रो जेति की प्रॉपर्टी तार फेस वैल्यू अछि 5 टका कि एथिरे एमिति तमे धातु रखिसो जोथिरे कि तमे ब्लेड तयारी करछो एंड ब्लेड तयारी करी 10 टका ने मार्केट रे बिकुछो. दैट मींस धातु भरी हे गेछि. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फुल बॉडीड कॉइन. एनी डाउट? So any full bodied coin, it is considered to be good coin, and if it is a full bodied coin, it is going to be voted. This is what we call Grisham's law. He told this कि भाई जति तमे एमिति किछि भी कॉइन तयारी कलो जोथरे कि अधिक धातु थिबो देन एटा सर्कुलेशन रे आसीबो ही नहीं. ताकू केही लोक सर्कुलेशन रे आनिबेनी. काली मु जदी चा पीबी ना मो पाखरे जदी 5 टंकिया कॉइन थिबो मु जदी जानि छि कि भाई एथरु मु 5टा ब्लेड तयारी करके बिकि दे परबी देन मु से चा वाला को 5 टका देबिनी. दरकार पड़ले मु ताऊ टंकिया 5टा देबी पछे 5 टका तो देबिनी. 5 टका मु चाहि मु घरे रखि देबी. बुझियला ना बुझियला नहीं? Okay, fine. Now good money is melted. This is not the concept. Good money is exported. ता विषय से कहनतले से voted वाला concept कहतले. करेक्ट नो? ताको लोक आ सर्कुलेशन रे रखबेनी एंड ताको स्टोर करले. देन मेल्टेड एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड मु कहनी कि से रिलेटेड किछ कांसेप्ट से कहनतले. जस्ट खाली कहतले कि सर्कुलेशन रे आसीबोनी. दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी कैप्चर. देन से कुआडे जेबो मेल्ट हबो कि नाही, एक्सपोर्ट हबो कि नाही, स्मगलिंग हबो कि नाही, ता सहित हमर कांसेप्ट रे नाही. जस्ट आमे जानिया दरकार. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? 2018 OPSC prelims question. Okay. Now चेक वगैरह ऑलरेडी हमें देखिए क्वेश्चन किछि आसीरे कोथरे प्रीलिम रे. नाउ जस्ट टू गिव ए क्लैरिटी कि मते वर्तन को whether the check is a money or not. Check is a money or not? Can I consider check as money? No. Very nice. Can I consider check as fiat money? Is check is going to be a fiat money? No. Is check is going to be a legal tender? Answer will be no. Very nice. Now then what is this check then? So these checks are the instrument for transferring or for utilizing the secondary function of the money. Am I right? Transfer of the value को थ्रू रहउची, चेक थ्रू रहउची. ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू को थ्रू रहउची. डिजिटल जो डिमांड ड्राफ्ट रहउची, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को थ्रू रहउची. एटीएम कार्ड द्वारा होची, क्रेडिट कार्ड द्वारा होची. दैट मींस these are going to be these checks या फिर तमरो डिमांड ड्राफ्ट हे वाला, क्रेडिट कार्ड हे वाला, डेबिट कार्ड हे वाला, दोज आर लाइक एटीएम कार्ड. These are used for what? These are the instrument to use money. Am I right? जो तरीके तमे कहछ तारा सेकेंडरी फंक्शन स्टोर द वैल्यू, ट्रांसफर द वैल्यू, डिफॉल्ट पेमेंट. क्रेडिट कार्ड अछि तमे ईएमआई भरछ हां कि नहीं? एनी डाउट? ओके. नाउ द कांसेप्ट इज चेक टाकू जो सिस्टम अछि कि चेक रो क्लियरेंस सिस्टम. एबे जदी न्यूज रे देखिबो एबे आरबीआई रो गवर्नर से कहछन कि चेक रो जो क्लियरेंस सेटा 2 घंटा रे होबा दरकार ताकि लोक वेट न करंदो. मींस काली जदी मते गोटे लोक चेक टे देला, आई थिंक पर दिन रे 2-3 दिन तळा न्यूज, काली जदी मते कि गोटे नोट टे देला, से नोट टाकू मते सॉरी नॉट नोट चेक जदी कि गोटे देला, देन से चेक टाकू मुने कि गोटे बैंक रे देबी. से बैंक वाला ताकू 2 घंटा रे क्लियरेंस करकी अकाउंट रे मोर पैसा डिपॉजिट कर देबा दरकार. होप इट इज क्लियर. तो बर्तन होची से काम केमती करूची, करेक्ट नो? सो सिंपल काम केमती करूची ना. फॉर एग्जांपल this is the person who gave one check to Mrunal sir, right? So if he gave Mrunal sir one check, so इतरे लिखा है who is the pay, right? कि किए पे करूची, किए नौची, right? Who is the receiver and then intermediate किए को बैंक, right? So बर्तन तमे देखो कि पैसा आसिला जनक पाखरु से गोटे चेक दे देले 50,000 टका. बर्तन मृणाल सर से 50,000 टका करिवे कोन? देन से सी कोन करिवे ना सी ताकू ये नहीं कि बैंक को देबे.
ओके तो बैंक को जेतले देबे बैंक कोन करबो वेरीफाई करबो कि वेदर सिग्नेचर प्रॉपर अछि ना ये लोकर जदि सिग्नेचर प्रॉपर अछि देन ता अकाउंट जो अकाउंट मेंशन हेछि ए अकाउंट ता कहार ए अकाउंट ता ए लोकर राइट ए अकाउंट तारु 50,000 टका डिडक्ट हबो एंड ए लोकर जो अकाउंट थिबो एक्सिस बैंक रे से अकाउंट रे पैसा डिपॉजिट हबो बट देयर वाज ए इशू कोन हे पारे मे बी हे पारे मृणाल सर मे भी पारे गोटे रॉन्ग सिग्नेचर कर दे पारिथांदे करेक्ट नो कहार ना जो लोक ताकू पैसा देले जदी रॉन्ग सिग्नेचर करके नहीं आसिले देन अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल ये लोक कोठी गोटे रखिथिले चेकटा देन चेकटा को चिरी की मृणाल सर पाई गले चेक रो टोटल चेकबुक टा एथरु गोटे पेज काढी के आनले एंड सिग्नेचर गोटे कर देले ठीक अछि जदी सिग्नेचर कर देले देन आंको बैंक रो तो 50,000 टका सेमिति कटि दिबो तो से सिग्नेचर को वैलिड करिया पाई वेदर दैट इज ए जेन्युइन और नॉट और एथिरे जदी 50,000 लिखा है देन मुन्नाल सर आसी कोन गले आ गोटे शून्य पके देले जना पड़ला कि 5 लाख ए लोक लिखि 50,000 एठी ए कर देले 5 लाख तो ए सब को धरिया पाई देयर इज ए सिस्टम कॉल्ड एनपीसीआई कहा अंडर रे एनपीसीआई रो चेक ट्रंकेट सिस्टम दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सीटीएस एंड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म तो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म कोन करछनी कि रोमान सैनी जेते बेले से चेक टा देबे कहा को मृणाल सर को तो सीए गोटे फोटो उठेकी तांको बैंक को पठे देबे को बैंक लेट सपोज दिस इज एसबीआई पाखरे ए चेक रो सिग्नेचर सहित गोटे फोटोटे थिबो इज दैट करेक्ट ओके देन मृणाल सर जेते बेले देबे कहा को ना एक्सिस बैंक को नाउ एक्सिस बैंक मागिवो एसबीआई ठू कि भाई तो पाखरे जो फोटोटा अछि से फोटोटा मते पठा बिकॉज़ मो पाखरे गोटे चेक पळे आसी टू चेक वेदर ए दीटांग फोटो ठीक ठाक अछि ना नाही ताकि जदि एठी जदि ये फोटो पठैचंदी 50,000 आ सिग्नेचर सहित एंड एठी जदि 5 लाख आ सिग्नेचर अछि देन चेक बाउंस हो then ये धरा पड़िबे कि भाई you did some changes in the check is that clear this is what we call positive pay mechanism any doubt in positive pay mechanism check truncate system positive pay mechanism hope it is clear right now very important from prelim perspective कि NPCI तो बर्तमान कथा होची तमे जतले पैसा बर्तमान ट्रांसफर करूछ देयर आर वेज राइट गोटे होची IMPS जोटा तमे फोन पे वगैरह यूज करूछ गोटे होची NEFT आ गोटे होची RTGS तो प्रिलिम पाई मु कहबी कि एटा भी इंपोर्टेंट जणा नै काली जदी क्वेश्चन आसीनी लास्ट 3 वर्ष हम क्वेश्चन देखिने बट वी नेवर नो बिकॉज़ ऑफ डिजिटल बैंकिंग देयर माइट बी क्वेश्चन सो टू बी इन द सेफर साइड लेट्स डिस्कस कि RTGS आ NEFT रो काम कोन तो RTGS आ NEFT जदी तमे NEFT कहूछ इट इज मोर फास्टर बट देयर इज ए टाइम पीरियड कि प्रति 30 मिनिट रे सेमानकर क्लियरेंस कोन हुए क्लियरेंस हुए जोठी कि टिके तुमको डिले हेई पारे बट आरटीजीएस जेतेले तमे गोटे ह्यूज अमाउंट ट्रांसफर करिया कहूछ लार्जर वैल्यूज देन 2000 करोड़ से भलिया जदी तमे कहूछ कि मु गोटे 2000 कोटी टका तमे एनईएफटी करि परिबनी ना ही तमे फोन पे द्वारा ट्रांसफर कर परिबो सो मैक्सिमम बर्तन फोन पे रे अलाउड केते अप टू 5 लाख राइट एनईएफटी रे मैक्सिमम तमे केते टका ट्रांसफर कर परिबो अप टू 10 लाख एंड आरटीजीएस रे तमे मैक्सिमम केते ट्रांसफर कर परिबो सेमति किछ मैक्सिमम नै बट ह्यूज अमाउंट 2000 करोड़ वाले से माने कहउछन बट ह्यूज अमाउंट तमे ट्रांसफर कर परिबो ना तो क्वेश्चन इज देयर इज ए सिचुएशन कि जदी तमे कहबो कि मु 3 लाख टका जण को हाता हाती पैसा देबी इज दैट लीगल 3 लाख टका तमे जण को बाय कैश ट्रांसफर करिया चाहछो हाता हाती इज दैट लीगल so what is the maximum limit you can do a cash transaction 2 lakhs sir. 2 lakhs right but can I give 3 lakhs to bank in cash can I give bank 3 lakh in cash Yes sir. so in bank there is no limit you can give to bank any amount of cash but in real like in circulation जेतले तमे आ गोटे पर्सन को दउछ who is not a bank right तो ताकू तमे मैक्सिमम केते दे परियो 2 लाख न हले रेड हे जो भाई ता पर जति एक तो सब पैसा जीवो राइट जो तो पैसा तमे ट्रांजैक्शन करतो एने सेति में तमे देखियो कि गोटे लोक पाखरे 2 लाख रु अधिक जेतले आसु फास्ट तो क्वेश्चन होची जदी से करप्शन करूची एते पैसा आसिला केमति कैश रे एते पैसा 2 लाख रु अधिक कैश ता पाखरे रहिला काहे ओके देन ताकू किए एते पैसा देला बोली ता पाखरे एते कैश होला देन जो क्वेश्चन तते जे देला से मान 3 लाख रु 2 लाख रु अधिक दिचो ना नाही एक्स वाई जेड बहुत सारा क्वेश्चन ओके सो नाउ वी अंडरस्टूड दैट कि लिमिटेशन अछि कि इन पर्सन रे तमे ट्रांजैक्शन केते करि परियो मैक्सिमम 2 लाख जदि तमे कहउछ ट्रांसफर करिवो थ्रू डिजिटल वे आईएमपीएस रे मैक्सिमम 5 लाख एनईएफटी रे मैक्सिमम 10 लाख आरटीजीएस रे मैक्सिमम और व्हिच इज ए बिगर वैल्यू 2000 करोड़ वाला तमे ट्रांसफर करि परियो नाउ द क्वेश्चन इज
कि एथिरु सबटु फास्टर वे किए आ सबटु स्लोअर वे किए स्लोअर वे होची एनईएफटी एंड फास्टर जो तमे देखो आईएमपीएस और आरटीजीएस दैट इज ए फास्टर वे इज दैट क्लियर बिकॉज एनईएफटी रे अगेन से चेक करबे कि को बैंक को केते टका जाउची से बैंक रो आंबा को केते टका आसुची तो इत्ते सारा ट्रांजैक्शन न करके से माने 30 मिनिट रे चेक कर देबे कि भाई आम बैंक रो तंबा को टोटल 5-7 टा कस्टमर से माने 5 लाख पठै दिले तम बैंक रो आम बैंक को 5-10 लाख टका आसिया कथा ओवरऑल सब ट्रांजैक्शन को मु तम पाखु न पठै कि अल्टीमेटली मु चेक कर देबे कि तमे मते केते दो 5 लाख टका दो पठै दे मो बैंक अकाउंट दैट्स इट बुझेला ना बुझेला नहीं दैट इज एनईएफटी प्रति 30 मिनिट रे थरे थरे से माने चेक करिवे ट्रांजैक्शन ओके एनी डाउट any doubt okay fine so the next concept is lightweight payment and settlement system see these are the current affair okay this is what we call win 24 current affair वाला system कि current affair रे कोन कोन अछि मनी बैंकिंग रिलेटेड आउ तार जहा जो जो जिंस ओडा हमें तो कवर कर जे PYQ बेस्ड रे सेगुडा मु कहि दउची जेतले M1 M2 M3 आसीबो सेतले M1 M2 M3 हमें करिया बिकॉज़ दैट वाज आवर PYQ बट एमिति न कि हमें PYQ खाली कर दे कि जा आ कुछ पढिबा ही नहीं PYQ थोड़ी आसीबो सब तो आसीबो कि we never know right okay so what is this lightweight payment and settlement system कि RBI रो इमरजेंसी बैकअप फॉर अल्टरनेटिव टू एनईएफटी आरटीजीएस और आईएमपीएस तो आरबीआई रो हमें देखिले कि भाई एनईएफटी और आरटीजीएस एई दिटा को इंपोर्टेंट कहार आरबीआई रो आईएमपीएस और यूपीआई याकू के करूची एनपीसीआई दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रीलिम क्वेश्चन कि आईएमपीएस आरबीआई रो इज दैट ट्रू आईएमपीएस को आरबीआई करूची no right so IMPS karo NPCI ro NEFT और RTGS karo RBI रो correct so you have to be very clear कि RBI रो NEFT RTGS जहा कि तार RBI रो कोन साइड अछि ई कुबेर साइड थ्रू रे से सबु बैंक रो तो सब बैंक रो थाए CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस CBS ऑफ SBI CBS ऑफ Axis CBS ऑफ HDFC सो सबु बैंक रो CBS उडा कनेक्टेड थांदी ई कुबेर साइड से ई कुबेर कहारो ना RBI रो सो RBI पाखरे सबु बैंक रो डाटा थाए बट कस्टमर रो डाटा SBI रो कस्टमर रो डाटा SBI रो CBS पाखरे थाए Axis बैंक रो डाटा Axis बैंक रो CBS पाखरे थाए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन HDFC रो डाटा CBS पाखरे थाए बट ई कुबेर सबु CBS सहित कनेक्टेड थाए होप इट इज क्लियर तो ई कुबेर थ्रू रे कोन होय ना NEFT आउ कोन होय ना RTGS डन okay now what is this lightweight payment system there कि जदी एमिति सिचुएशन आसिला इलेक्ट्रिक बिल नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं साइक्लोन हे गला तो से टाइम रे मनी रो जो सेकेंडरी फंक्शन जोटा कि हो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट whether I can do that or not so to provide temporary and portable solution during the natural disaster and war it can be operated from anywhere by bare minimum steps how it works it is not required but lightweight payment settlement system is something called कि इन फ्यूचर रे किछि गोटे जदी कैलामिटीज आसिला से टाइम रे भी हमकु पैसा ट्रांसफर कर परथवा दरकार दैट मींस भाबो जनरली काहे के माने कहउछनी काली गोटे साइक्लोन आसिला बैंक वगैरह से एरिया रे ऑपरेट होबनी काहे ना गछ पछ सब भांगी तारा फारा सब छिड़ी जाइथिबो करेक्ट नो स्टिल तमे जो माने एक्चुअल बेनिफिशियरी जो माने अफेक्टेड हिचनी तांको अकाउंट को तमे पैसा पठै परिबो कि नहीं तो सेथि पय हमें कोन यूटिलाइज कर परिबा लाइटवेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एनी डाउट एलपीएसएस तारा फंक्शनालिटी हम देखिबा नहीं हमें जस्ट जानिया दरकार कि हां चलो बैंक जेतले गोटे साइक्लोन आसिला से टाइम रे एलपीएसएस यूज हबो जोटा कि बटन चलची आरबीआई रो इमरजेंसी बैकअप अल्टरनेटिव टू एनईएफटी आरटीजीएस एंड आईएमपीएस एनी डाउट ओके डेली ट्रांजैक्शन लिमिट विषय टिके दे दो कि डेली ट्रांजैक्शन लिमिट बर्तन तमे तो ऑलरेडी देखिथिबो कि एनईएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस जोटा कि हमें कहउछे बैंक रो ट्रांसफर करा होछे देन दिस इज व्हाट वी कॉल्ड यूपीआई तो जनरली तमे देखो एयरटेल रो से भी यूपीआई को इंटीग्रेट करछि यूपीआई कहारो यूपीआई इज कॉल्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो एटा किए तयारी करछि ना एनपीसीआई तयारी करछि किए तयारी करछि सर आईएमपीएस आईएमपीएस एटा होछि गोटे गेटवे आईएमपीएस इज नथिंग बट गेटवे एनईएफटी आईएमपीएस यूज करूछि काहाबू यूपीआई फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू क्लियरली बर्तन तमे मोबाइल रे जेतले तमे फोन पे रे गोटे ट्रांजैक्शन करबो लेट सपोज तमे कहबो भाई मो फोन रु तो अकाउंट को जाउछि कि नहीं मु टंका दे ट्रांसफर करूछि टिके देखिलु ए जो टंका दे ट्रांसफर करबो तमे केमति ट्रांसफर करबो तमे फोन पे खोलिबो ना फोन पे रे जाई जिवो तमे टू अकाउंट देन सेठी गोटे फोन नंबर मारिबो ए जो इंटरफेस ता किए देला दैट इंटरफेस इज कॉल्ड यूपीआई यू अंडरस्टूड राइट
that interface is called UPI, but the functionality behind जो मेकानिज्म चली कि तुम अकाउंट लिंक अच्छी सीबीएस सहित को सीबीएस सहित तुम बैंक रो सीबीएस सहित हां कि नहीं देन तुम को अकाउंट को छाड़िया चाहो देन तुम फोन नंबर मोर देलो देन मो फोन नंबर रे गोटे प्राइमरी अकाउंट सेट हेतियो फोन पे रे देन सेटा लिंक अछि लेट सपोज एक्सिस बैंक सहित देन देयर विल बी कम्युनिकेशन बिटवीन योर एसबीआई अकाउंट विथ माय एक्सिस बैंक अकाउंट कि से पचारियो कि भाई ए नंबरटा प्रॉपर अछि कि एटा गोटे प्रॉपर कस्टमर की जदि कस्टमर प्लीज एक्नॉलेज तो बैकएंड रे जोटा तमे जानो करेक्ट नो तो बैकएंड रे गोटे एक्नॉलेज आसीबो जोथिरे तमे देखै दबो ना जेतल तमे मो नंबर मारिबो सेतले देखै दबो कि नंबरटा काहा रे अछि तो लिखाइ जो कि ज्योति प्रकाश साहू देन तमे जानि कि भाई ऑथेंटिकेट ए जो ज्योति प्रकाश साहूटा आसीला एटा कोठु आसीला एटा मो सीबीएस रु तम सीबीएस को गला बुझियला ना बुझियलानी एक्सिस बैंक रो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन रु से माने ट्राई कले ई नंबरटा को चेक करिया पई कि ए नंबर रो अकाउंट होल्डर किए से माने देखले कि ज्योति प्रकाश साहू देन सेटा से माने पठेले मेसेज काहा को तम अकाउंट को देन तम सीबीएस रु तम फोन पे रे शो कर देला कि भाई ओके दिस इज ज्योति प्रकाश साहू वैलिड अछि देन तमे आगु गलो देन टंका पेमेंट करी तमे तमरो पिन वगैरह जहा दबार थिला सेटा तमे दे देला एंड टंका मो पळे आसला सो से जो बैक एंड रो मेकानिज्म दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आईएमपीएस यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन आईएमपीएस एंड यूपीआई यस सर ओके सो बैक एंड मेकानिज्म इज आईएमपीएस जोटा कि एनपीसीआई डेवलप करिछि कि केमिति कनेक्शन हबो तम बैंक रु मो बैंक को एंड मो बैंक रु केमिति एक्नॉलेजमेंट जिवो देन फाइनली मु केमिति पैसा रिसीव करबी दैट इज द मेकानिज्म ऑफ आईएमपीएस बट ताकू यूज करिया पई सेटा तो बैक एंड हे गला ताकू यूज करिया पई गोटे यूजर को एते नॉलेज दरकार नै तुमको कहबो भाई तते आगो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से तो कनेक्ट करिया पड़िबो देन तते गोटे मेसेज पठिया पड़िबो कोठी की मो एक्सिस बैंक तापर एक्नॉलेज करिवो एगुडा तुमको दरकार नै ना गोटे यूजर को एते दरकार नै जदि एते की दरकार होउथांदा तो भाबो ना इंडिया रे डिजिटल पेमेंट केमती स्टार्ट होला इजीली बिकॉज ऑफ यूपीआई इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आईएमपीएस तो होची मेजर रोल बैक एंड रे बट यूपीआई सिंप्लीफाइड कर देला को कि भाई तते बेसी किसी जानियार नहीं जस्ट तू खाली कह नंबर टा देन आमे तते केते टका छाड़ीबू बस डन पिन नंबर दे सेसो तीनटा का स्टेप रे तोर पैसा ट्रांसफर हेसिबो सो दिस इज डन बाय यूपीआई बैक एंड प्रोसेसिंग इज डन बाय आईएमपीएस एंड दिस इज डेवलप्ड बाय whom एनपीसीआई आईएमपीएस एनपीसीआई यूपीआई एनी डाउट ओके नाउ कमिंग टू यूपीआई रो डेली लिमिट कि यूपीआई रे हम डेली लिमिट केते जाय करि परबा कैटेगरी ऑफ डेली लिमिट नॉर्मल जदी ट्रांजैक्शन तमे करबो लाख टका ठीक अछि यूपीआई अंडर रे जदि तमे कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट लोन पेमेंट ईएमआई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जदि तमे करछो जोडा गोटे कैपिटल मार्केट वाला कांसेप्ट करेक्ट नो गोटे ह्यूज अमाउंट रो मनी नॉर्मल तमे कहउछ कि मु कोठु गोटे जस्ट डाली चावल आनिबी कि कोन आनिबी नॉर्मल ट्रांजैक्शन लाख टका कैपिटल ट्रांजैक्शन मींस इन्वेस्टमेंट करिया पर्पस रे अछ लोन अछि जोडा तार रिपेमेंट करिया अछ मैक्सिमम 2 लाख पर डे बट इफ यू वांट टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और रिटेल डायरेक्ट स्कीम आईपीओ सब्सक्रिप्शंस राइट जोटा तमे शेयर मार्केट रे आईपीओ रो कांसेप्ट अछि देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बेसिकली पिलर सी रे आसीबो शेयर मार्केट आ बॉन्ड मार्केट ता विषय हम बेसी डिटेल भी जिबार नै बिकॉज़ वी सॉ नॉट मेनी क्वेश्चंस राइट इन ओपीएससी मेडिकल एंड एजुकेशनल सर्विस तुमको पेमेंट करिवार अछि एजुकेशन पिलर ऑफ पेमेंट करिवार अछि 3 लाख टका देन तमे कहउछ कि मु कोन करि परिबी यूपीआई अंडर रे भी करि परिबी मोर मैक्सिमम लिमिट केते दोछि पर डे 5 लाख सेति भाई मैक्सिमम आईएमपीएस रे मैक्सिमम लिमिट केते 5 लाख बट इन जनरल ताको जदि तमे सब कैटेगराइज करिवो नॉर्मल ट्रांजैक्शन लखे जदि तमे क्रेडिट कार्ड लोन पेमेंट वगैरह करिवो 2 लाख जदि तमे एजुकेशन पर्पस या फिर गवर्नमेंट रो किछि बॉन्ड किनिया को चाहू तो देन 5 लाख होप इट इज क्लियर okay fine then the next concept is related to UPI Lite so what is this UPI Lite it is what we call on device wallet कोन ना फॉर एग्जांपल मो पाखरे बहुत सारा बैंक बैलेंस अछि तो ताकू मु बर्तन कोन करबी मोबाइल वॉलेट रे नै आसीबी करेक्ट नाउ ताकू मु ट्रांसफर करबी टैप एंड पे फॉर एग्जांपल गोटे एनएफसी थाए मोबाइल रे तमे देखिबो एनएफसी थिबो ओके तो जद तमे देखिबो कि गोटे गोटे कार्ड रे बर्तन वाईफाई वाला कार्ड आसलानी करेक्ट नो तो वाईफाई वाला कार्ड कोन सेथिरे गोटे एनएफसी अछि से डिवाइस रे एनएफसी एनेबल अछि देन जो मेसिन डा अछि सेथिरे भी एनएफसी अछि तो सेमान भितरे कम्युनिकेशन पाई कि हां भाई सिक्योर ट्रांजैक्शन पाई सेमान कोन गले तो तुमको कहबो कि वाईफाई कार्ड रे जदि तमे गोटे क्रेडिट कार्ड अछि या फिर डेबिट कार्ड अछि तमे चाहौ कि पिन न दबा पाई तमे चाहौ कि कार्ड को जस्ट टच कर दियो देन तमर जति पैसा कटिबा कथा कटि दियो देन सेठी जनरली कोन करंदी मैक्सिमम लिमिट गोटे स्टोर करंदी मैक्सिमम 2000 टका जाय तमे स्टोर करि परिबो तो बर्तन कथा होची कि इन केस यूजर कोन करूची ना मोबाइल वॉलेट रे बैलेंस पकेबो देन यूपीआई लाइट वॉलेट ऑन हिज मोबाइल ऐप जोटा कि से डाउनलोड करिवो देन मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन 5 टका मैक्सिमम बैलेंस स्टोरेज फॉर कैपेसिटी इज 2000 ओके कांसेप्ट इज सिंपल फॉर एग्जांपल करंट नहीं ओके या फिर तुम्हारा इंटरनेट चालू ही नहीं
बट तुम वालेट रे पैसा अछि समहाउ जेतल तुम इंटरनेट थिला भाबिनो तमे तुम वालेट रे केते टका रखिछ आनी कि 2000 टका काली तमे गोटे स्टोर को गलो देन सेठी तमे इस टू फेस करि पारो 100 टका जिंस आलो भाई सर्वर एरर देखौची चालुनी ये होनी सी होनी हां कि नहीं दैट इज द इशू इन प्रेजेंट सिनेरियो काली तमे हठात किना गलो देन देखिला कि तुम मोबाइल रो बैंक रो सर्वर बिजी अछि देन तमे 100 टका पेमेंट करि परिबो कि फोन पे रे हबो ही नहीं देन यूपीआई लाइट वालेट रे कोन हबो कि भाई तमे ऑलरेडी यूपीआई गोटे वालेट क्रिएट करछि जोथि तमे मैक्सिमम केते टका राखि परिबो 2000 टका से 2000 टका रु यूपीआई लिमिट आज ऑफ 2023 रो लिमिट अनुसार मैक्सिमम यूपीआई लाइट अनुसार तमे केते रखिलो ना 2000 टका तो बर्तन तम वालेट को पळे आसला आ तमर बैकएंड सहित कनेक्शन हवा दरकार नहीं तम बैंक सहित किसी कनेक्शन हवा दरकार नहीं तम वालेट रे 2000 टका अछि तो बर्तन तमे कहबो कि ए सेलर पाखर सेलर बैंक अकाउंट को दिया दरकार केते टका ना 100 टका पठेर अछि तो तमे जे टच करे दियो तम डिवाइस को देन डन भाई 100 टका ट्रांसफर हो दरकार नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं पेमेंट हो बुझिला ना नहीं इंटरनेट रा आवश्यकता नहीं you understood what is UPI Lite then so maximum limit per transaction गोटे ट्रांजैक्शन तमे केते करि परिबो 5 टका मैक्सिमम वॉलेट रे बैलेंस केते रखि परिबो 2000 टका दैट मींस वंस तमे 2000 रखि देला गोटे मैक्सिमम गोटे ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम तमे एनएफसी रे केते करि परिबो 5 टका एंड वंस भाबिनियो चार थरो कर देलो तमे 2000 सरी गला पुनी तमे लोड करो ऑनलाइन रे इंटरनेट ऑन करो 2000 टका तम अकाउंट रु लोड करो यूपीआई लाइट रे जो तम वॉलेट अछि देन सेठी तमे अगेन ट्रांजैक्शन करिया स्टार्ट करो आउ इंटरनेट तमु दरकार नहीं लोड करिया पे इंटरनेट दरकार इज दैट क्लियर सो इफ यू सी बेनिफिट्स no need to provide UPI pin दरकार नहीं because online payment सेमिति रही जो NFC टेक्नोलॉजी द्वारा during the transaction less chance of transaction failure even the sender bank server is facing technical issue still you can able to transfer the money तो सेथिरे तुमको असुविधा होबा hope it is clear okay so if you see this is what UPI Lite and इथिरे इंटीग्रेट कोन हेची ना NFC which is a science and tech वाला concept कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रे NFC आसे कि NFC रे से माने नियर फील्ड कम्युनिकेशन ने से माने कोन करिवे आ तुमको दरकार नहीं फॉर एग्जांपल तमे देखिथिबो केबे केबे पेट्रोल पंप वगैरह रे जदी के कार्ड देखौथो से कहबो कि भाई वाईफाई अछि देन से माने कोन करते जस्ट छुआई देबे 5 टका तेल पकेले ठीक अछि 5 टका कट जो आ पिन दबा दरकार नहीं because that is itself is a communication like that is itself is a authentication mechanism तमे ताऊ कहलो कि भाई वाईफाई अछि मु पिन दबा दो तमे नहीं जाओ so it is contactless that's what we call it as contactless tap and pay facilities touch and pay facilities छुआई दियो एबे धीरे धीरे आगु से माने कोन करछंदी एटीएम कार्ड को हटे कि से माने ट्राई करछंदी इवन मोबाइल एनएफसी अछि कैन वी इंटीग्रेट एटीएम्स विथ एनएफसी जस्ट मुने की गिव मी सेकंड ओके सो जस्ट मुने की मो मोबाइल टा को मु एटीएम कार्ड रो सामना रे टच करे देबी देन जति की पेमेंट दरकार मु नहीं आसी बुझेला ना एनएफसी रे बाय डिफॉल्ट मो अकाउंट को पैसा कटिछो बिकॉज़ मोबाइल एनएफसी अछि एटीएम कार्ड रे जदी मु एटीएम मशीन रे जदी मु एनएफसी फिक्स कर देली कार्ड रो आवश्यकता नहीं काई मु फिजिकल कार्ड धर की जिबी बुझेला ना एनी डाउट हियर then there is another concept of interchange fee by NPCI 2023 मार्च रे कोन ना interchange fee of NPCI तो सेथिरे कोन होउची ना जेतले हमें कहूचे कि गोटे NPCI अंडर रे जो IMPS यूज करजे फोन पे वगैरह सेथिरे हमें जेतले ट्रांजैक्शन करूजे जनरली हमहु कोनोसी टंकाटे एक्स्ट्रा दबाकू पडू नाही प्लेटफॉर्म पे राइट सो इफ यू आर सेइंग डायरेक्ट बैंक पेमेंट फ्रॉम बायर अकाउंट टू द सेलर अकाउंट यूपीआई ट्रांसफर करछो तमे जीरो रे but if more than 2000 from buyer prepaid mobile wallet then there is a 1.1% interchange fee by NPCI on seller तो जो सेलर अछि ताठू कोन करूची ना NPCI जदि तमे कहबो कि Amazon wallet रू मु पेमेंट करी ओके then there is a chance that there will be interchange fee because eta कोन हला ना तम wallet रू गला not कि बैंक अकाउंट see UPI works on bank account am I right UPI doesn't work on wallet जोटा हमें कहले मिनी वॉलेट वाला राइट एठी हमें जस्ट संग संग पढिले ना कि यूपीआई लाइट रे सेठी हमें वॉलेट रो कांसेप्ट पढिले बट नॉर्मली यूपीआई कोठू काम करे यूपीआई रे तम फोन नंबर जोटा कि तम बैंक अकाउंट रे पैसा अछि कोनोसी वॉलेट रे पैसा रखिया दरकार नै ऑनलाइन वॉलेट रे कोनोसी पैसा रखिया नै तम बैंक अकाउंट रु अन्य गोटे बैंक अकाउंट को ट्रांसफर हेजो दैट इज व्हाट यूपीआई करेक्ट नो बट एठी कोन होउची एठी तमे Amazon रो वॉलेट रे पैसा रखिछो दैट मींस ऑलरेडी तमे तम बैंक अकाउंट रु उठे की पैसा Amazon रे रखिछो देन तमे ट्राई करछो पेमेंट करिया पे गोटे एक्सिस बैंक रो अकाउंट को कोठू ना तम Amazon wallet रो ताहाले मे बी देयर माइट बी इंटरचेंज फी सो दिस इज 2023 रो मार्च रे माने लेके आसले कि भाई हमें इंटरचेंज फी मागीबू इज दैट क्लियर नाउ
यूपीआई रिलेटेड करंट अफेयर कौन ना श्रीलंका और मॉरिशस 2024 रे एमाने स्टार्ट कले यूपीआई स्टार्ट करिया पे तो यूपीआई अवेलेबल इन नाउ श्रीलंका एंड इट इज आल्सो अवेलेबल इन मॉरिशस so 2024 February UPI facility now available in Sri Lanka and Mauritius. This will help tourists traveling to Sri Lanka, Mauritius and pay through mobile phones. UPI also available in which countries na Bhutan re available ama pakha country, Oman re available, UAE re available, South Asian nations, Nepal, France re available. बुझला नहीं तो बर्तमान काली जदि क्वेश्चन पळे आसो को यूपीआई अवेलेबल अछि अमंग ऑफ द फ्यू नेशंस राइट तो तमे एटलीस्ट क्लियर थिबो कि आम पाखरे इंडिया पाखरे को तीनटा रहला ना गोटे मॉरिशस सहित इंडिया रो भलो कनेक्शन इंडिया रो श्रीलंका सहित इंडिया रो भूटान सहित बांग्लादेश रो ना नाही ओके नेक्स्ट साउथ एशियन नेशन सहित से कंबोडिया हे जाओ सॉरी नॉट कंबोडिया थाईलैंड हे जाओ या फिर वियतनाम हे जाओ लाओस हे जाओ कंबोडिया हे जाओ देन मालয়েশিয়া हे जाओ सो साउथ एशियन नेशंस नेपाल जोटा कि इंडिया पाखरे नेपाल और भूटान करेक्ट नेपाल गोटे भूटान गोटे श्रीलंका गोटे ये तीनटा तो इंडिया पाखरे मॉरिशस गोटे एक्स्ट्रा जदि गल्फ कंट्रीज देखबी ओमान गोटे देन यूएई गोटे यूएई सहित तो इंडिया रो से जो डी डॉलराइजेशन वाला कांसेप्ट यूज अछि करेक्ट आ गोटे साउथ एशियन नेशन एंड फ्रांस सहित एनी डाउट ऑन दिस फाइन ओके दिस इज नॉट रिक्वायर्ड okay now coming to our next concept is related to pillar 1 ro question koda wala this is Grishma law to lower interest m1 m2 m3 m4 am I right okay this is UPSC OPSC 2020 now the question is out of 4 concepts of money supply used in India m1 m2 m3 m4 the post office savings are included in m1 only m3 m4 only m4 only m2 m4 only what is the answer M2 M4. M2 m2 m4 okay now coming to this let me see if I have some PPT this is related to that m1 m2 m3 m4 concept now the concept is what is this narrow money what is this broad money what is this money supply itself correct no तो बर्तमान तुम कहतो कि तुम पाखरे मनी अछि then what is this money supply रो गेम कथा कोन money supply what is this money supply कि money रो circulation right कि we used to measure the money supply through what m3 why m3 because m3 जदि तुम कहबो कि मोर अधिक रो अधिक money supply दरकार that means the more and more of lending and depositing करेक्ट नो डिपोजिट तमे करूछो देन लोन दोछो डिपोजिट दोछो लोन दोछो ताहले तमर मनी सप्लाईटा बढ़िबो आमे राइट मनी सप्लाई केतेले बढ़िबो जेतेले अधिक रु अधिक डिपोजिट हैला देन सेविंग रो कांसेप्ट नाही सॉरी नॉट सेविंग खर्च रो कांसेप्ट नाही सब तमे सेविंग करो ताहले तमर मनी सप्लाई बढ़िबो ओके तो जदि तमे कांसेप्ट देखिबो समरी इट विल बी देयर okay तो मनी रो मेजरमेंट पई कोन आमे चेक करू मेजर ऑफ द मनी सप्लाई इज रिलेटेड टू coin that is in public or currency that is with public plus demand deposits in bank that is what we call m1 any doubt in m1 we call it as narrow money रे हमर आसुची लोकंग पाखरे पब्लिक रे केते coin आउ currency अछि plus demand we call it as current account and saving account right demand deposit in banks demand deposit not time deposit there are two type of deposit one is called demand deposit the other deposit is called time deposit am I right demand deposit माने कोन ना current account saving account कि भाई मु आज पैसा देछि काली चाइले मु नै जिवि time deposit माने कोन FDRD fixed deposit मु 5 वर्ष जाय पैसा दोछि देन एक्सपेक्टेड कि 5 वर्ष जाय मु पैसा मागिबिनी तो मते अधिक रु अधिक रिटर्न भी मिलिबो इंटरेस्ट रेट रे बट जदि मु कहबी कि 5 वर्ष जाय एफडी करिछि देन 2 वर्ष रे मु भांगी देबी 2.5% इंटरेस्ट रे मते बाकी से 2 वर्ष रे जति पैसा देबो सेमान से मते दे देबे बट 5 वर्ष रे देबेनी मे बी पेनल्टी भी लगे पारंदे करेक्ट दैट इज एफडीआरडी सो हियर what we say m1 is narrow money generally the people they will prefer that we will have a saving mentality हमको इन्वेस्टमेंट करियार अछि आमे निज पाखरे काई पैसा अधिक रखिबु सेति की पैसा रखिबु जेति की हमर नेसेसरी अछि तो m1 होछि narrow money तो मैक्सिमम मनी से माने कोन करथि इन्वेस्टमेंट
करेक्ट नो से माने फिक्स डिपॉजिट कर देबे गोटे नॉर्मल लोक झियो बागर अछि मु गोटे काम करछि फिक्स डिपॉजिट कर दउछि आजिठू 5 वर्ष पर झियो बागर हबो तो एटा डबल हे जाय आमे राइट तो मैक्सिमम लोक मैक्सिमम पैसा कोन करंती फिक्स डिपॉजिट होंगे नहीं तो डिमांड डिपॉजिट या फिर निज पाखरे पैसा केतले रखंती जेतले गोटे प्रिकॉशनरी मेजर थाए काली कोन गोटे कार जदी हेई जिवो मो पाखरे किछि पैसा हातरे थिबा दरकार सो दिस इज रिलेटेड टू डे लाइफ चलिया पई किछि पैसा दरकार देन डिमांड डिपॉजिट रे किछि पैसा दरकार हठात किना मते जदी कोन दरकार हबो मो किछि पैसा 10 जदी मु कहबी कि मो पाखरे 10 लाख टका अछि तो आउट ऑफ 10 लाख मु एक्सपेक्ट करबी कि मो हातरे मु रखबी 50,000 टका इन केस ऑफ किछि खर्च पई आउ बाकी तक मु कोन करबी भाबिने 2 लाख टका खंडे रखिबी मु मोर सेविंग अकाउंट रे आ बाकी 7.5 लाख टका मु फिक्स डिपॉजिट कर देबी दैट मींस मोर मनी आई एम फिक्सिंग इन फिक्स डिपॉजिट व्हिच इज टाइम डिपॉजिट रादर देन डिमांड डिपॉजिट तो बर्तन मते को नैरो मनी कांसेप्ट रे जो गुडा होची बहुत जल्दी तमे कोन कर परबो आनी परबो एंड सबटु कम मनी सेतिर थिबो am I right okay so this is not required bank money okay now there are two things one is related to commercial bank one is related to post office so when we talk about m1 is related to banks not post office okay the post office is something related to it is giving loan to government not to the public that means post office रे जदि तमे पैसा थोइछ देन पैसा उठेवार भी टाइम टेबल टिके अधिक लागि पारे तमको जोटा कि हम ए पिक्चर रू क्लियर हबा को पिक्चर रू ना the final diagram this is the final diagram you can take a screenshot of this if you want now when you say m1 money तो m1 तो फर्स्ट कथा होची करेंसी विथ पब्लिक एटा तो सब केस रे आसीबो चाहे से m1 हो m2 हो m3 हो m4 हो am I right देन कमर्शियल बैंक जो आमे कहूचे डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट ये दिटा कांसेप्ट आसीबो करेक्ट तो m1 रे हमर कोन आसीबो ना करेंसी इन पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट जोटा कि तुम करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट रे बैंक रे केतो आसीसे am I right तो बर्तन जदी कहबा कि m1 whether it is narrow money or broad money माने बहुत पैसा जेति कि सेविंग दिला सब तक हम हेठी रखि देछो तो से भलिया कांसेप्ट तो नाही बहुत कम जदी तुम पाखरे मो पाखरे बर्तन भाबिनो 100 टका अछि तो भाबो ना 100 टका रो मु रखिली केते मैक्सिमम 10 10 20 टका रखिबी पाखरे हाथ 10 टका आ 10 टका मोर सेविंग अकाउंट रे बैंक रे तो टोटल तुम केतना रखलो 20 टका होंगी नहीं that means the amount of quantity that you are going to store in m1 that will be very less true that's why it is called narrow money तो narrow money रे तमे कम पैसा रखुछो but if you will talk about the liquidity of that narrow money liquidity of m1 it will be more जो मोमेंट रे चाहिबो से मोमेंट रे तमे ताकू कैश रे कन्वर्ट करते true or not what is liquidity at any moment you can convert it into cash right physical cash बुझियो ना बुझियो ओके तो m1 रो लिक्विडिटी बहुत अधिक काहेकि ना तमे एठी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रखिछ जो मोमेंट रे आज मु 10000 टका रखिछि बैंक रे काली मु कहबी सेविंग अकाउंट रे मोर 10000 टका दिला मते 10000 टका दे दियो दबा को बाउंड सेमान दे देबे दैट मींस एनी इंस्टेंट मु सेडा को कन्वर्ट कर दे परबी कैश रे सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाई लिक्विडिटी सेते 4 स्टार बट क्वांटिटी वाइज वेरी लो क्वांटिटी ओनली 10 10 20 टका सेते क्वांटिटी वाइज इट इज लो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज नैरो मनी m2 रे अगेन पब्लिक पाखरे 10 टका सेविंग अकाउंट रे 10 टका एंड से मैंने कहले कि भाई पोस्ट ऑफिस रो मु सेविंग रे करंट अकाउंट जोटा अछि सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस रे तो कोनो से करंट अकाउंट न थाए बिजनेसमैन माने एमिति न बिकॉज़ तांगर सिस्टम ही नै ना ऑनलाइन सिस्टम वगैरह से नै तो सेविंग अकाउंट रे भाबिने मु रखि देली 10 टका तो पोस्ट ऑफिस रो सेविंग अकाउंट बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट कहार लिक्विडिटी अधिक बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट whose liquidity is more डिमांड डिपॉजिट liquidity area. That means at any point of time you can try to change it with what with cash correct no so जदि मु वर्तमान कहबी कि अगेन m2 रे मु डिमांड रे रखुची 10 टका तो m2 रे पोस्ट ऑफिस वाला कांसेप्ट पळे आसला जदि मु देखियो क्वांटिटी एटलीस्ट m1 टू टिके अधिक बट लिक्विडिटी जदि देखबी m1 टू टिके कम एटलीस्ट पोस्ट ऑफिस रे सेविंग अकाउंट रे जतले जाकी मागीबी से माने मते टिके तो हैरान करबे एठी तो जते जल्दी मिल जबो एठी से कहबे कि आज पोस्ट ऑफिस बंद अछि गवर्नमेंट छुट्टी अमक ये से हमर एटीएम नाही एटीएम रो पैसा उठे परिबोनी करेक्ट नो ये सब कांसेप्ट रे मते टिके तो टाइम लागि जबो दैट मींस लिक्विडिटी सेते अधिक नो आज लाइक एज m1 कमिंग टू m3 इट इज टॉकिंग अबाउट पब्लिक पाखरे जति पैसा अछि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बैंक रो प्लस बैंक रो पोस्ट ऑफिस कथा हम कहूनी बैंक रो डिमांड डिपॉजिट ऑप्शन तो डिमांड डिपॉजिट रे सबटु अधिक पैसा थिबो 40 टका
सॉरी टाइम डिपोजिट रे 40 टका डिमांड डिपोजिट रे 10 टका तो जब तुम टाइम पैसा देखियो लगभग 60 टका ओके तो वर्तमान कथा होची एथिरे पोस्ट ऑफिस चिंता ही कराउनी तो आरबीआई जनरली पोस्ट ऑफिस को गवर्न कर ही पारेनी बिकॉज पोस्ट ऑफिस रो सब पैसा कोठी की जीव लोन रे गवर्नमेंट नबो तेनु आरबीआई पाखरे बैंक रो पावर अछि आरबीआई बैंक को गवर्न कर परबो तेनु आरबीआई माने कोन ना मनी सप्लाई रे आरबीआई M3 को निए ना से M2 निए ना से M4 निए तो M3 जदि आरबीआई कैलकुलेट कर दबो सीए कैलकुलेट कर दबो कि भाई जति की लोक बैंक रे पैसा थौछनी बिकॉज लोक को कन्वीनिएंट भी हबो बैंक को जो टाइम रे से चाहे बैंक रो उठे दे पारे पोस्ट ऑफिस बंद रहउची देन मो पैसाटा दिया है जाइए काकू ना गवर्नमेंट मानू देन गवर्नमेंट केतले पैसा फेरेबो जे माने सेटा करिवे लोन गवर्नमेंट नउची राइट ऑल्दो पोस्ट ऑफिस इज मोर सिक्योर बिकॉज सेटा गवर्नमेंट वाला करेक्ट नो बट लोक ट्राई करिवे कि हमकु भाई गवर्नमेंट से तो मतलब है बैंक भी ठीक ठाक अछि देन देयर इज डीआईसीजीसी तो से माने इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करछन तेनु हमकु सेटा ठीक अछि हमर कोन इशू नै सो वी टॉक अबाउट M3 so M3 is related to broader money means if you see the amount of quantity that is more in M3 instead of M1 M2 not definitely not equivalent to M4 because M4 रे तो पुनी पोस्टल रे भी पैसा आसीबो काहे ना किछ लोक पोस्टल रे भी पैसा रखो सो M4 जब तमे देखिबो इथरे सब पळे आसीबो M1 M2 M3 M4 मते को बर्तन ए जो क्वेश्चन ता थिला ए क्वेश्चन ता को ए पर्सपेक्टिव रे करबा टफ ना इची काली जति एठी क्वेश्चन आसी M1 M2 M3 M4 तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स आर इंक्लूडेड इन व्हाट पोस्ट ऑफिस रो सेविंग ओके थिंग पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स व्हाट वुड यू आंसर post office ro instead of saving I am saying post office ro time deposit what will be the answer M4 okay M2 M1 M4 what about others post office ro time deposits see time deposits मु लिखिति बोली देखा जाउछि कि तुम मानू ना एबे दिसला बिकॉज मो स्क्रीन बोते मते लागो लैपटॉप रे मो जो कनेक्ट करछि इंटरनेट टिके स्लो अछि बर्तमान मते दिसला जो ठीक अछि तो दिस इज M4 राइट पोस्ट ऑफिस रो टाइम डिपॉजिट जदि मु खाली लिखिबी देन केवल M4 रे ही से कवर होछि जदि मु पोस्ट ऑफिस छाड़ देकी मु लिखि देबी कि बैंक रो डिमांड डिपॉजिट तो कोन आसी ऑप्शन न थाई पारे मे भी मते को बैंक रो डिमांड डिपॉजिट रे कोन कोन आसीयो ऑल राइट M1 M2 M3 M4 बैंक रो टाइम डिपॉजिट only M3 answer will be B right M3 M4 correct no okay any doubt on this M1 M2 M3 M4 any doubt M1 M2 M3 M4 all good okay next so this question we solved it so the answer would be M2 M4 okay I'll cover the schemes little bit card related updates okay I think this PDF I will share okay or you will go through because anyway Mrunal sir know like these video is also available in online so if you want you just go through these current affair based right these are current affairs which are added in 2024 2024 ର current affair कोन कोन अछि तो ताकू टिके देखि दो प्लस मोय पीडीएफ टा पठै देबे होप दैट विल वर्क राइट
then आमको आउ रहला कोन नेक्स्ट टैब रे आमे देखिबा see today what I discussed is I discussed something related to trend of OPSC questions. Then we try to talk from the perspective of what is money, money कोन, fiat money कोन, legal tender कोन, ये तीनटा आमे देखिले करेक्ट. then full bodied coin जो थरे आमे ग्रिशम्स लॉ कले, ग्रिशम्स लॉ जो थरे आमे कहले कि good coin will be hoarded, OPSC PYQ right. then money fiat money legal tender ए तो क्वेश्चन आसीनी बट आसी जाई पारे तुने मानो. then full bodied coin and गोटे थिला token coin. तो full bodied coin और token coin भीतर डिफरेंस होची intrinsic value. तो full bodied coin रे intrinsic value will be greater than face value, but token coin रे face value will be greater than intrinsic value. जो थवे कहले हमें 5 टंकिया जेतेले से माने मोटा थिला देन से माने सेतिरे निकेल कोबाल्ट अधिक मिसे देले ताकि आउ से माने आयरन रो तो से माने जो ब्लेड वगैरह तयारी करथिला ब्लेड वगैरह तयारी करथिले. दैट मींस तार धातु से माने चेंज कर देले. दैट द अदर कांसेप्ट इज कॉल्ड डिबेसमेंट. कोन कहै ताकू डिबेसमेंट कि तातरे जति धातु भरी भरी हे दिला ताकू तमे कमई दियो, ताकू पतला करई दियो. जोठी ताकू 10 ग्राम रो दरकार होतला 10 ग्राम जगह 2 ग्राम दियो. then तारा फेस वैल्यू बड़ा हे जिवो इंट्रिंसिक वैल्यू. सो इफ फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन intrinsic value then everyone will try to use it as a coin, as money rather than in other purposes right. जो थरे सर्कुलेशन रे तो एटलीस्ट रहइबो तार जहा काम अछि जोथि बेंकी सेटा बना हेला से कामटा सेटा हबो. बुझिला ना बुझिलानी. सो दिस वन वी टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड टोकन bodied coin and full bodied coin, token coin and full bodied coin. Then we talked about from the perspective of NPCI, IMPS, RTGS, NEFT. एतिक आमे देखिले. देन आमे देखिले कि तार लिमिट कोन जोठी IMPS रो लिमिट होची 5 लाख, RTGS रो लिमिट हेमति किछ नै 2000 करोड़ भले तमे ट्रांसफर कर परिबो. NEFT रो लिमिट होची 10 लाख. ये 5 लाख भी ये भी सब कैटेगराइज कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन लखे जदि तमे लोन वगैरह पेमेंट क्रेडिट कार्ड पेमेंट वगैरह करिया होतो 2 लाख, जदि तमे एजुकेशनल पर्पस या फिर गवर्नमेंट रो बॉन्ड वगैरह किनिया पे जाउछो अप टू 5 लाख. एनी डाउट इन दिस. लाइट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जोटा हमें देखिले कि जदि कोनोसी इशू आसी गला कैलामिटी टाइप रो से टाइम रे एटलीस्ट ऑनलाइन पेमेंट हे पारुथबा दरकार, बैंक को ट्रांसफर हे पारुथबा दरकार. यूपीआई लाइट देखिले जोथरे कि गोटे वॉलेट आसीबो से वॉलेट रे 2000 टका जाय तमे एट टाइम लोड कर परिबो एंड प्रतिटी ट्रांजैक्शन रे 500 लाख तमे खर्च कर परिबो थ्रू एनएफसी टेक्नोलॉजी एंड दैट विल बी अगेन ऑफलाइन बेस्ड. ओके, दिस इज द करंट अफेयर दैट आल्सो वी टॉक्ड अबाउट. देन वी टॉक्ड अबाउट M1, M2, M3, M4. So basically we solved two PYQs. One is related to money supply related. जदि काली क्वेश्चन आसिला कि between M1, M2, M3, M4 which has less liquidity, less liquidity, liquidity कहार सबटो कम? M4 correct no. M4 will have very less liquidity. Between M1, M2, M3, M4 which are called to be narrow money? M1. M1 and M2. Which is called broad money? M3 and M4. Very nice. Now so my next point will be related to banking. Okay, तो 2000 नोट रो करेंसी विषय भी अभी डिस्कशन करले. तो बर्तमान मते को ये क्वेश्चन टा जोटा थिला which of the following statement are correct in respect to the withdrawal of 2000 currency notes from circulation. The move is part of RBI's compound note policy. It is aimed to provide public with high quality currency notes. 2000 rupees currency notes were introduced in year 2000. Printing of 2000 currency notes were stopped in the year 2018-19. तो कौन लागू तुम आंसर? Okay, just try to eliminate. No, there are options. Anyone?
A B B B B 1 3. Okay, please tell. Okay, why it is A? Those who are saying A, 214. Or why it is B? Those who are saying 1 and 3. See, we already talked about something called public RBI ର जोटा statement थिला सेतिर हमें already कहले कि this is related to what? This is related to RBI ର जो clean policy थिला, clean currency policy, right? कि हमको दरकार जो soil rate वाला concept जो तार लाइफ स्पान जोटी हमें कहउछ कि मात्र 4 वर्ष 2017 रे माने तयारी हितला तो बाय डिफॉल्ट एटा तो कटि जेबो करेक्ट जदि तमे देखिबो हमें कोन कहले सेठी कि सेकंड 2009 राइट कि स्टार्ट हेतला केबे ना 16 17 प्रिंट हेतला बट आंसर एठी कहउछ कि 2014 रे प्रिंट हेतला करेक्ट नो 2014 2015 रे प्रिंट हेतला तो तीनटा तो कटि गला तीन कटि गला एटा कटि गला आ रहला 1 and 4 and 2 and 4 बट 2 टा तो क्लियर अछि होंगे नहीं क्लीन पॉलिसी सेटा भी हमें डिस्कशन करले ना एबे कि आरबीआई रो क्लीन नोट पॉलिसी टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी बैंक नोट्स तो से अनुसार 2 ता तो करेक्ट अछि देन एटा भी कटि गला देन आंसर विल बी 2 and 4 okay now coming to this move is a part of RBI's compound note policy. No, it is related to clean note policy, not compound. It is related to clean note policy. Then one ta same three koti gala. Then one koti gala, two ठीक अछि, three koti gala because this is not 2015, this is 16 17. And 4-5 वर्ष 2021-22 भितर से खत्म हो ता लाइफ स्पैन. Printing of 2000 currency notes were stopped in the year 2018-19. Correct. 18-19 रे currency notes stop हो गला. बट 2023 रो सेप्टेम्बर 30 सुधा से कहले कि भाई जति के अछि ताको तमे आनि के डिपॉजिट कर दियो विथड्रॉ हो जिवो आउ बैंक ताको आउ लोन रे दबो ही नै. Hope it is clear, right? So we solved 3 PYQs today.